I should be live. Hello. Hello, hello. Okay, I hear myself. And the video streaming as well. Okay, perfect. Hmm. Okay. Hopefully, today I stream for like not 2.5 hours and like stream as usual, like for around 8 hours or probably more than that. Here, this is basically 2.5 hours. I just created this video. This will update. Look, 3 hours, not even 2 hours. What is this? Here I did pretty well. Then this was a pretty good stream. This was a pretty good as well, I would say. But rest only 3 hours, three, and now this is 2.5 hours. Hopefully today we stream for much longer. I need to first set up my league. Mm, why am I not logged in? What? I have to log in league code. Just a minute. Okay. I am sharing my screen. Perfect. Oof. Let's solve some storage AP problems. Yeah, longest common subsequence. Yesterday, I was doing a problem. Yeah, it was longest common subsequence problem only, I believe. Yeah, what is this? Let's solve this first. Write a function to find the longest common prefix string amongst an array. Oh, yeah, I remember this problem. This is a good problem, I remember. Array string or try. Yeah, this problem requires try and they have marked it as an easy problem. Okay, I'll solve this later. I have to implement try first. Ooh, let's reset first. Okay. Given two strings, text1 and text2, return the length of their LCS. If there is no common subsequence, return 0. A subsequence of a string is a new string generated from the original string with some characters can be none, deleted without changing the relative order of the remaining characters. For example, this is a subsequence of this. Okay. Hmm. Hmm. Okay. So we have int t1. Basically, this will be the size for text 1. This will be the size for text 2. Public int LCS. Oops. This dot t1 equal to text1 dot length, and this is 2. Okay. Now we obviously send our
text 1, text 2, our ith pointer, it will be for text 1, our jth pointer, it will be for text 2, and I don't think we need anything else. Okay, so the starting, hmm, I should start from 0. Why not? Let's think of base cases, right? If I reaches the end, that is um T1, or J reaches the end, we have to either return 0 or a 1. Now let's think what we should return. Should it be a 0 or should it be a 1? If I reach the at the end, okay, we'll figure this out later because I need to think of this base case when I write the main logic here. So let's see. If text one dot char at I is equal to text two dot char at this, then if this is true, we increment both. We increment both by one. Yeah. If this is not true, then we check. We once increment return ECS. We once increment the ith counter, and then the second round we increment the jth counter and s- get and what will this return? This will return the number of times it is equal. So this will be 1 plus the number of times it is equal. So I should return 0 here. Hmm. Ooh, okay. So 3. Why did it fail this test case? When it's equal, R1. Let's check what character, it is adding out. Okay. Yeah, we have A, C, E, and E again. Why do we have E again? Here we have A, B, C. Here we don't have any matches. Is it because this returns one, like one matching, and this returns one matching as well?
So that's why it is double counting it. Should it be math.max? I mean, this will fix this test case, but nah, see, why is there another E? What is this coming to? Okay, so I should just increment the longest string, right? So I need to check if T1 T1 is smaller than T2, then just replace string temp equal to T1 is smaller, right? So text to text 1. Now text 1 equal to text 2. Text 2 will be equal to 10. So we ensure that text 1 is always greater. The length of text 1 is always greater than text 2. Okay, let's see now. Yeah, this should work. Let me check the first. Check. Oh, sorry. Will this pass on the middle is. Let's see why. Because we to consider both possibilities. Okay, so it was max. Hmm. You know what? But I do want to check if my logic works or not. I will give it a submit. I, I will submit it. Let's see. This is int. No. This is dp of t1 t2. Int dp. If dp of t of I comma j is not equal to -1, then return dp of I comma j. Then equal to 0, I guess then 1 I plus plus base then dp -1. That's it. We should be good. I have memorized this code. Wait, what? Oh, oops. Let's see if this gives the wrong answer or not. Yeah, it does give a wrong answer. Why do?
We also guess it. So we have S that is common in both. Yeah, I do want to check this, print this. How they did not print this? Oh, yeah, because this is zero. Makes sense. Hmm. So it will fail. It's like if I do math dot maths of this and this. Yeah, this should pass. Yeah. Hmm. Now, what I want to solve is let's mark this as done. Best time to balance and stock with it out. So to solve this problem, like the stock problems, longest common subpaths, longest common suffix queries. Let's see this first. There is a country and cities. Yeah, we'll solve this problem. 29.1% acceptance rate. There is a country of n cities numbered from 0 to n minus 1. In this country, there is a road connecting every pair of cities. There are m friends numbered from 0 to n minus 1 who are traveling through the country. Each one of them will take a path consisting of some cities. Each path is represented by an integer array that contains the visited cities in order. The path may contain a city more than once. Okay, but the same city will not be listed consecutively. Given an integer n, and it will be this is the path of the highest and taking the length of the longest common subpath that is shared by every line or zero if there is no subpath of the path union segments of cities within. Okay. 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 I'll be back soon. I need to eat some breakfast first. I'll be back. Take
Hey everybody, this is Larry. This is me going with Q4 of the weekly contest 248 on LeetCode, longest common subpath. So hit the like button, hit the subscribe button, join me on Discord about this farm, other contest farms, let me know. Hit the like button, hit the contest 248 on LeetCode, longest common subpath. So hit the like button, hit the subscribe button, join me on Discord about this farm, other contest farms, let me know. We actually usually go over, in chat in Discord right after the contest. So if you're a contest nerd like I am, or maybe just like it, come hang out. Anyway, today's problem is today's Q4 is longest common subpath. So this one is a hard problem. Obviously, I spent an hour and 10 minutes on this, and not many people solved it, right? About 122 people. Maybe a little bit more now. I think the count is a little bit off, but you get the idea. Not many people solve it. So there are a couple of dots that I dot during the contest, and you could watch me solve it live. Though obviously, fast forward afterwards because it's a long time. I actually tried doing some stuff with keeping track of pointers, or I even tried doing a breadth first search thing where I start with the path of length 1, keep track of everything, try length of path of length 2, and so forth, but that was too slow. I tried doing that, but with almost like an A-star search, if you want to call it that, where it built from furthest first, but it was still too slow. And you can actually see some of the techniques that I did to kind of test a long test case. Something that I wouldn't say I discovered it lately, but something that I personally came up with lately of creating long TLE test cases. So you can look into that later. Maybe I'll even go over it during the content or during the farm explanation as well. So those are the things I did. The other thing that I would mention is that, to be honest, this was a very obvious suffix tree, suffix array problem. If those things don't mean anything to you, probably don't worry about it. If it's something that you're curious about, definitely read about it. It's actually very interesting, very nerdy. I loved it, but it's also something that, to be honest, I have never implemented it in my life optimally. I implemented a sort of a suffix array in another language previously, but not optimally. So, but that said, if that's something that you're interested in, then play around with that. But that, just to be clear, that, like I said, I've almost never done it in my life. It is ridiculously hard. But someone did it, I think, in the experts. Like if you look for the other people's solutions, so that people have done it because people have pre-written libraries, and I didn't have a pre-written library. I'm not going to Google someone else's library or something like that. So I didn't do it that way. And it took, and to be honest, if you watch me solve the contest, I spent about an hour, maybe an hour, give or take, on the wrong solution, and then. To be honest, at the very end, I did something a little bit YOLO-y, because I thought for an hour that it was the wrong solution, that it was going to be too slow. But I have to do something tighter about the math, because I think the thing is that the key part of the constraint is that the sum of the path is 10 to the fifth. So there is some math here that makes it. I cannot prove a type bound on this one, or at least maybe my math is just bad. So if you know how to do the proof, leave it in the comments below. So so basically what I did is binary search. So I did a binary search on the answer. And what does that mean? That means that, I asked myself, is there an answer of length x, right? If there's an answer of length x, then let's try an answer of length, of a longer length, right? If there's no answer of length x, let's try a smaller length. That's basically the idea. And if you kind of say it that way, my computer's a little slow, so if you say it in that way, then you can see that if there's an answer of length x, then every length of x plus 1 has to be true, right? Because if, for example, if there's a path of length 5, oh, sorry, wait, I said that the other way around. Sorry, I really mixed it up. Okay, I meant the other way around. Wow, that is really bad, actually. Sorry about that. I hope I didn't confuse you. But basically, if there's a path of length 5, that means there's always a path of length 4, and there's always a path of length 3, and so forth, right? And if there's no path of length 10, say, then there's no path of length 11 or 12 or 13, right? Because you can construct that from the paths directly. Because if there's a path of length 5, then obviously in that path of length 5, it contains the path of length 4. So basically what that means is that if you look at all possible answers, it's going to look like something like this, where, there's a path of length x, there's a path of length x plus 1, until some other number, and then
and then it's not going to contain that number. So T means true, F means false. It means that, okay, at certain point, X is not going to have a path of length X, and then there's no path of X length -1, and so forth. So then the idea here is, okay, there are only two possibilities, of course, which means that, okay, if we test an X and it's true, what does this mean, right? That means that this, well, first of all, it means that if this arrow is mid, then first of all, it means that mid is true, right? Or mid is a possible answer. And then we want to get rid of everything to the left because we know that we don't care about it anymore because we know that if nothing else, mid is the answer, right? So, okay. Yeah. So that goes to my binary search, which is that, you know, if mid is good, then we set left is equal to mid because in here, we have an inclusive range of left right. So when left is equal to right, then our range is contains one number, right? So that's basically to me explaining binary search a little bit. So that explains this while loop. If this is good, then that means that we can set the left side to mid because left is inclusive, or this is an inclusive range and mid is a possible answer. If not, we know that right is not a possible answer, and we set to mid -1. And going back to here, if this is a false, that means that this is not a right answer, and also everything to the right of it is not a right answer, and that's why we have a mid -1. And therefore, mid, I do it add 1 because so that you can think about it as rounding up, because this makes it round down for whatever reason. So that's the binary search portion. Yeah, take some time to kind of understand that part, because the next part is probably the harder part. Yeah, and then the next part is what there are a couple of ways to do this. I think there's you can use Robin Cobb, you could use KMP, but I use Robin Cobb to kind of do fingerprints. Oh yeah, let's actually go over this a little bit as well. So here I chose so the smallest possible answer is 0. The biggest possible answer is the length of the smallest path, because you cannot have the shortest path. You know, you cannot have a longer common path than the shortest path. And keeping in mind that here that I sort the path by its length in the beginning. I know that I'm jumping a lot. Sorry about that, but yeah, but I sort the paths by the shortest path, or by the path lengths, and then I take the inclusive path to be the length of the shortest path. Okay. And then now going back to the good function, so I use Robin Cobb, and basically what I do here is that, okay, here generate fingerprints for paths of length target. And I'm not going to go over Robin Cobb that deeply in this video because it's an interesting algorithm and it's a good algorithm. I definitely recommend you go over it, but yeah, it's going to be a really long video if I go over that. So, but basically the idea is that I generate fingerprints for path of each length target, and this is basically the way to do it. You can think about it as actually what we did earlier with ModPow. You just basically keep a rolling, you hash the substring, and then you kind of shift it over by 1, and then you hash that, and so forth. If you do it naively, it's going to be really slow, but the part about Robin Cobb is that you can kind of think about it as shifting it 1 digit at a time, and then chopping it also 1 digit at a time. And that's basically it. And this is kind of like sliding window as well. And then I keep track of all the fingerprints in the hash set. And then now, for every other path, I go over it as I generate fingerprints as well, also for length target. And yeah, as soon as this is found, we're done, because we know that it is good for this path. Otherwise, if it is not found, then we return false, because that means that not every path has to contain the same thing. And basically, the reason why I did this fingerprint is so that we can match in all of one time, which is this lookup thing. If kern is an S, for every fingerprint, we're able to match all possible paths of length target in all of one time. So basically, S now contains all possible paths of length target. And this allows us to look up all possible paths of length target
The topic is Rabin-Karp algorithm. It's a pattern matching algorithm or string matching algorithm. The problem is, if a text is given and a pattern is given, then we have to find out whether this pattern is present in this string or not, or text or not. There are various algorithms for string matching or pattern matching. This is one of the pattern matching algorithm. Let us see how it works. First, I will discuss the basic idea of Rabin-Karp algorithm and what is the worst case of Rabin-Karp algorithm, then how to improve the worst case, and finally we'll see the actual algorithm. Let us start. See, this is a text given and this is the pattern we have to find out. So you can see that AAB is here, existing here inside the text. Then how do you check? We know the basic algorithm in which we will start comparing the alphabets. Here we don't want to compare each and every alphabet. So if you take a pattern, there are 3 alphabets. So instead of checking each and every alphabet, can't we make it as a single value? How we can make it as a single value? So we can convert this into some numeric value. Let us see how it is possible. See, if the letters, if I take A, B, C alphabets, then for the alphabets there are ASCII codes like small a, lowercase a is 97. So we can use that number. Okay, we will use that number. But if I use that number and explain you, then the numbers will be bigger. So to take small numbers, just to understand the algorithm, instead of 97, I'll give my own codes. A, let it be 1, and B as 2, and C as 3, D as 4, and so on. So I have given codes for all the alphabets from A to J. 10 alphabets I have taken. If you want, you can take ASCII codes also, but this will be simple for discussing the topic. Now here is a pattern. Now using those codes, we will try to find out a single value for this pattern. So I will use those values. This is 1, and this is also 1, and this is 2. I will add these values. This is 4. Even if you want, you can multiply also, that is your wish. I have added these values. So now whatever the value I got, this I will call it as hash code. And the procedure of getting that value, that is the function, we will call it as hash function of this pattern. P, let us say P is a pattern. So we call this as a hash function. We are using hash function and finding value of a hash function. Now this hash function, we use it for finding this pattern inside this text. So how to do that? See, as the size of this one is a 3, so let us say M is size is 3, and the size of this one is N, and this is 6. Now, how to check this? So I will take 3 letters, that is depending on the size of this pattern, 3 letters. And what are their codes? 1 plus 1 plus 1, and this is 3. But see, this is hash function value is 4 and there it is 3. It means they are not matching. I don't have to check the characters. Just I have used a function. Function means it will take constant time. So using constant time I found out the value and it is 3 and this is 4. They are not matching. So this pattern is not there. Then slide to the next set of 3 alphabets. So I'll remove this and I will extend this one. Plus this is also 1. So this is 3. Now slide next. See, this sliding is called as rolling hash function. From the present value I am getting the next value. So that is called as rolling hash function. We will see it further. I'll include this one. So the code for this one is 2. So this is 4. They are matching. Once you get a match, confirm really this pattern is there or not. So now check the alphabets. These are A and these are also A. These are B. Yes, they are same. So pattern is found from index 4 to index 6 in the main string, that is text. So this is the basic idea of Rabin-Karp algorithm. I will take one more example and show you quickly. I have taken one more example. Let us quickly look at this example. Here we will understand what does it mean by rolling hash function. Let us see. There's a text given here and there's a pattern. First find out the hash value for this one. So the codes are B is 2, B is 2, and C is algorithm. Remember this one. Now we have to find out whether this is present here or not. So just take first 3 alphabets because this size is a 3. So first 3 alphabets, this is 1 plus 2 plus 3. This is 6. And this is not matching with this one. Then just slide it and get the code, hash code for the next 3 letters. So for that, from 6, this is so hash function or hash code for the next set of characters easily in constant time. Take out this alphabet and take this alphabet. So this is 1. Then take out this and add 2. Now this is 7 and so code for C is 3. This is again 6, 5. So this is 10 and 10 is matching with this. So it means there is a pattern, there is a possibility of pattern. So verify it. B, B they are matching, C, C they are matching, and E, E they are matching. So yes, there is a pattern available in a string. So this is the basic idea I have given you. Now I will show you the drawback of this method. Then afterwards I'll show you actual algorithm. So in the previous 2 examples, we were going through the main string only once, and
at only one time we have checked for the pattern. So we have gone through entire string only once, scanned through the whole string, and we have checked for the pattern only once. So the time we say it was. If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. You're prompting cursor over 100 times. N minus m plus 1. This is the average time of Rabin-Karp algorithm. Now let us see the worst case for this one. So I have taken an example here, and let us look at worst case. I have taken a string of size length is 11, 4 plus 3, 7. There is a match. So it means this pattern would be there here. Possibility of pattern there. So compare this. C and D. No, they are not matching. So no, it's not a pattern. Then take next 3. A is 1, C is 3, and C is 3. Again 7, again it is matching. But this is not a pattern. After comparison, we'll know that it's not a pattern. See, we have got 3 matchings so far. Right? 3 matchings. But those are not patterns. So in this way, we are comparing this pattern every time. In our example, though we are checking only one alphabet, but in some cases, we'll be checking most of the alphabets, and it is not matching at the end. So let us continue. CAA here I will take. This is 3 and this is 1 plus 1. This is 5 and this is 7. They are not matching. Okay. Next, this is 5. They are matching again. And compare this. See, this is 7. 7. This is 7. But check whether the pattern is there. No, pattern is not there. So we are getting every time hash code that is matching with the hash code of this one. This is the drawback. So if you take such a simple hash function, then there is a possibility of collision with the other pattern, other substrings which are having the same code, though they are not the patterns. So the drawback here is that there are many hash codes that are matching, but those are not the patterns. So actually these are called as spurious hits. So these are called as spurious hits. Means the matching is there with the code, but those are not patterns. So these are waste hits. This is the drawback. And in such a situation, the maximum time taken by this algorithm may be mn, theta of mn. This would be the maximum time. But we expect the algorithm to take n minus m plus 1 time. This will happen if there are no spurious hits. So how to avoid spurious hits? So this is because of the hash function. We selected a very simple hash function because of which these hits are happening. To avoid this spurious hits, we have to take a strong hash function. So what is the idea of hash function given by Rabin-Karp? So now this we will be completing the algorithm now. So I will show you the actual hash function that is suggested by Rabin-Karp. Now through an example only, the same example I will show you. See here the codes are, this is code 4 and this is code 2 and this is 1. So let's take it like this. 4 into 10 square plus 2 into 10 power 1 plus this is 1 into 10 power 0. Why power 2 power 1 power 0? Because there are 3 letters only in the pattern. So start from 0, 1, 2. So if there are 5 letters in a pattern, then 0, 1, 2, 3, 4. So highest power we can get 4. So if there are n letters in a pattern, then each letter of a pattern, P1 into 10 to the power of m minus 1 plus P2 into 10 to the power of m minus 3 goes on. So that same thing we have the 3. So first one is 3 minus 1, then 3 minus 2, then 3 minus 3, that is 0. This is how we will multiply these codes with this powers. Then what is this 10? This is the base value. How many alphabets I am using? 10 alphabets I am using, so I have taken that as a base value. You can use any value you like. This is just the idea given by Rabin-Karp. Hash function means if you know about hashing, you can define your own function depending on the patterns or the text that you are using. But for the alphabets, like for a string, they have suggested this method. So if I consider all English alphabets, then for 26 alphabets, I should take it as 26 power 2, 26 power 1, 26 power 0. If I say lowercase, uppercase, all special characters, everything, then total ASCII codes are 127. So this should be 127 power 2, 127 power 1, and 0. So to make our example simple, I have taken only 10 alphabets. That's the reason I'm writing 10 here. Now let us find out its value. So this is 400 plus 20 plus 1. This is 421. So the hash code for this one is 421. Now using this code, we try to find out a match. See, just now for the same example, this was a drawback we found out. That is the worst case we found out because of the hash function. Now I modified the hash function. That is, I have taken the one suggested by Rabin-Karp. And there is one more thing that I have to include it at the end. I will show you. Now let us find out how much this is. This is 3 into 10 to the power of 2 of 0. So this will be 300 plus 30 plus 1. Oh, it is not matching. The code that we got is 421. I'll write down here, right? It's not matching. See, this is not a spurious hit because we have changed the hash function. So now it is not matching. Now I have told you about the rolling hash function. See, so many powers and everything we are taking, I have to calculate the next one. So what to do? So from 331, see, I'll just remove this. Now I have to find out the hash code for next 3 alphabets. These 3 means what this should be 3 into 10 square it should be. Then this should be 1 into 10, not power 0, power 1. So it means I should multiply these 2 into 10. So what I can do is I will take this as it is. I'll take this as it is and multiply it by 10 outside. Then I have to remove this one. And also I should include C. So overall, how to do this? Let me show you how to do this. This entire thing was 3 into 10 square plus 3 into 10 power 1 plus 1 into 10 square.
So this actually is 331. So from this subtract this 3 into 10 square. So 3 into 10 square is subtracted. So this term will be gone. If I subtract it, this will be gone. So this portion will be remaining. So this entire thing multiplied by 10. So these numbers will be raised by 10, right? So this becomes 10. C code is what? 3 into 10 power 0. How we do this? See, actually this is 331. So what we do is from 330 term add it. So you can just observe this carefully how this is happening. So this is the result as it is divided by 10, and this, so I am having the hash code for these three alphabets, that is 1 300. So this is 31. Then to that 31, this portion I got, that is 31. That 31 I should multiply it by 10. So this 31 multiplied by 10. So I get 310. So this is gone. Now for this C, I should add this 3 into 10 to the power of 0. It means just 3. So in this plus 3, so this is 313. This is the method of getting the hash code for the next set of characters using rolling hash function. So once you got one function, then from there only subtract, multiply, and then add, you get the hash code for next set of characters. So this is 313. Is it matching with 421? No. Let us calculate for next from here. So I get 31. One more alphabet. So this is 1 in plus VA, where is a basic idea, then I have to be able to do these calculations by yourself. This is the method. So you may have to observe this little carefully so that you should be able to do these calculations by yourself. So I have given you the basic idea, then I have shown you the drawback. The reason of drawback was bad function. So I have introduced a better function that is actually given by RabbinCobb. So this function is a rolling hash function, as well as they have given this that base powers we should take. So this is called as Rabin fingerprint function. So now there are no spurious hits. So the time taken by this algorithm is theta of n minus m plus 1 in average case. But still, though you have defined such a hash function, still there may be a possibility that there is a spurious hit. So still the worst case time of this algorithm is mn. Though by using this hash function, we are reducing the chances of worst case. Nothing else. Now one last thing that I have to tell about this one. See, when we are taking the powers of this, we may be getting a very large value. Now, if you are getting a very large value and when you have written a program for this one, then it depends on the size of the data type. Like if you take integer 4 bytes, it may be exceeding the capacity of 4 bytes. So if it is exceeding, the number will overflow. If you want to avoid overflow, then you can mod these large values. You can perform mod upon these large values. So this entire function, we can perform mod. With what value we should perform? It depends what is the maximum size of your data type. If it is a 32-bit data type, then you can mod it by 2 power 31. Like if it is 32-bit, then 1 bit is sign bit, 31 we take. So I'm taking it as 31. If you say no, it is only positive, then you take 32. It depends on the language you are selecting. It depends on the data type you are selecting. So for getting the result of this hash function, if you believe that that may be exceeding the capacity of the variable, that is data type, then you can mod it with that one. So that you make sure that you get the values in between those two only. So in the rolling function also you can use mod so that you get the values within that range only. But once you apply mod, then there is a chance of spurious hits again. Then again the algorithm may be going towards worst case time of mn. So it depends on you how you want to use it. See, if you know about hashing, you can define any hash function if you have the study on the data that you are using in hash function or hash table. So here also, if you have the study about the characters that you're using in the strings, then you can define your own hash function also. So the basic idea of RabbinCobb is what? Use a hash code to avoid checking the pattern in the with 95. Hey everyone, welcome back and let's write some more neat code today. I know I probably don't say this enough, but I just wanted you guys to know that I really love you. We're given a string s and we want to convert it into a palindrome by adding characters to the front of it. And we want to return the shortest possible palindrome that we can get. So considering the first example, the simplest thing would be if we had an extra a over here, then the input string is itself
would be a palindrome, in which case we just return the input string itself. We're not returning the length, we're returning the string that we can form. That A does not exist, so we have to add it ourselves. And once we do add that A, well, this is the shortest palindrome that we can form. So just kind of analyzing the problem, what would even be a brute force solution? Hi, the topic is KMP algorithm. KMP algorithm is used for pattern matching. If a string is given and a pattern is given, then the problem is to find out whether this pattern is existing inside this string or not. If it is there, then find out its index. Now for this problem, there are various algorithms where KMP is also one of the algorithm. There is also a basic algorithm, naive algorithm. So let us look at how naive algorithm works. Then we can understand the problems or the drawback of naive algorithm. Then we'll see how KMP is better than basic or naive algorithm. Let us see the basic algorithm. See, if there is a string given and we have to find out this pattern, then we will check if it is there or not. So we'll start from the first letter of a string. So I'll write on this pattern here, D, E, F. Compare the first letter of a string with the pattern. It's not matching. If it is not matching, then shift the pattern to the right by one step. D, E. Malik. Subtract this 3 into 10 square. KMP algorithm is used for pattern matching. E, F. Now compare this one with this. It's not matching. Then shift the pattern by one. Now compare this one with this. It's not matching. Then shift the pattern by one step. This is not matching. So shift the pattern by one step. This is matching. If there is a match, no need to shift. Check the next. That is also matching. And check the next. This is also matching. So yes,
a pattern is found inside the string at this place, at this index, that is 4 to 6 index. This example was very simple. I'll take one more example and show you. Now one more example. Here this is a string and the pattern that I have to search is this one. So I have to find out whether there is a match for this pattern in this string or not. So I'll not draw a string and shift it, but instead of that I will take index I and j here. So first letter I and j, this is matching. There is a match. So move j as well as I. So I'll just write I and j. They are matching. So move j as well as I. They are matching. So move j as well as I. Again they are matching. Now move j as well as I. There is a mismatch. See, we started this pattern comparing from this position onwards. As I just now said that in the previous example I have shown you that if there is a mismatch, this pattern will move by one step. So there is a mismatch. So again j will come in the beginning, but what about I? I will start from this place now. Already we have started from the beginning A, now we'll start from B, that is index 2. Mesa School of Business. India's first startup-focused business school. Our campus. So this is the problem in basic algorithm. Already I have reached till 5 and it is again shifted back. So I is shifting in the string. This is the waste of time. This is the extra work in basic algorithm. Now again we will start from here. So this means that we have started the pattern from here now, shifted the pattern to the right by one step. That is the meaning. So I came here again. There is a mismatch. So go to the next. So we'll start comparing from here. So it means we have moved the pattern from here onwards now. From here we'll be checking. Mismatch. There is a mismatch. Move I. There is a match. So move j as well as I. There is a match. So match means move j again in the beginning and bring I again on this part. See, just now we have started from here. Already we have checked these alphabets. We are checking them again. So this is the drawback of basic algorithm. We are repeatedly checking the characters in a main string. Let me finish it quickly. There is a mismatch. One thing here that the characters in the string are compared repeatedly. Whenever there is a mismatch, it is shifting I, backtracking I, or moving back I. So this backtracking of I we want to avoid. Let us see a worst case of basic or naive algorithm. Worst case of basic algorithm. I have a string and a pattern. Let us run basic algorithm on this one. I starting from here, j starting from here. There's a match. If there's a match, move I as well as j. So first I will move j and also I will move I. There's a match. So move j and also I. There is a mismatch. When there is a mismatch, move j to the beginning and move I to the second position. This is the starting point. Just now we started from here, then I should start from here now. Start from here again. Again start. This is matching. Move j, then AA matching. So move j and move I. AB is not matching. So again move j in the beginning and move I on the third place. In this way continue. See, the problem in this one is AAA is repeating. Why I should move? I should move just j one place and see that this is A, both are same. Just check that next alphabet is B or not. You don't have to move back and start again from the beginning because all these are same only. That's it. That's it. The basic algorithm doesn't study the pattern, doesn't observe what is there in the pattern. As blindly it is checking every alphabet and just shifting this pattern by one step in case of mismatch. As this is backtracking I, what is the maximum time it is taking? If the size of the string is n and the size of the pattern is m, then almost this pattern is repeatedly compared in the string and this will be m into n, order of mn time. So this is the time taken by basic algorithm or naive algorithm. Basic algorithm takes order of mn time. Now, can we study the pattern and reduce some time? Let us see what is the idea of KMP. There is some terminology used in KMP algorithm. First, let us understand that terminology. See, if there is a pattern given here, then we can find prefix or suffix of a pattern. So what does it mean by prefix of a pattern?
We have to take the subset of these alphabets in a pattern, but we must start from the beginning of the pattern only. How many characters I should take in a subset? As many as you want. So I just take A. Okay, yes, it's a prefix. No, I will take A and B also. Yes, this is also a prefix. I want to take A, B, C. Yes, this is also a prefix. I will take A, B, C, D. Yes, this is also a prefix. All these are valid prefix. Then, what about suffix? I have to take the subset of this string, but I should start from the right hand side only, right? And as many I want, I can take. So let us start. Can I take C? Just C? Yes. Can I take B and C? Yes. B, C. Can I take A, B, C? Yes. A, B, C. Can I take D, A, B, C? Yes. D, A, B, C, and more. But let us stop here. Now the idea of KMP is that inside this string, is there any prefix same as suffix? Let us see. A, do you find anywhere? No. A, B, A, B, A, B. No, it's not there. A, B, C. Yes, it's there. See, this is matching. So this is the prefix that is also there in suffix. Also there in suffix. So this is the observation what KMP algorithm will do on a pattern to avoid the number of comparisons. Instead of confusing with the prefix and suffix, I'll make it simple. Is the beginning part of a pattern is appearing again anywhere else in the pattern or not? That's what we have to observe. I'll take few examples and show you. Let us look at the pattern. And in KMP algorithm, for a pattern, we generate a pi table. That pi is also called as longest prefix, which is same as some suffix. That is LPS. We name it as pi or LPS, whatever the name you like. So how that table is prepared, I will also show you that. Just observe it carefully. Let us take first pattern. A, is it appearing anywhere else? Yes. Oh, B is also appearing. A, B. So this A, B is appearing here also. Then again A, B, again A is appearing here. You see A as well as B is also appearing. Okay, both are appearing again. So what we do is, we'll prepare a table. We'll write 0, 0, 0, 0. This AB is matching with first and second. As I said, the indices we will start from 1 to onward. So this is matching with 1 and 2. This is not matching. This is matching with 1 and 2. This is not matching. This is the pi table. Now there is an algorithm. I don't want to show you that algorithm. I'm not tracing the algorithm. Simply I am showing you how to prepare it. If you trace the algorithm, you'll get the same results. Next, let us look at this pattern. A, is it appearing anywhere? Yes, it's appearing. Oh, B is also appearing. So this is matching. So this is 1 and 2. Then A anywhere? Yes, it's appearing here. So BC also appearing. So these three are matching. 1, 2, 3. Rest of them are all zeros. There's a pi table. Now let us check. A, is it appearing anywhere? Here. A. What about this? A is appearing here, 1. And this A is also appearing. So from here, if you take, this is matching with this 2. So 2. And these 3 are matching with this 3. So take 3. Then anywhere else, yes, A is appearing here. The next A is also same. So 2. And the rest of all the values are zeros. So this is the base of KMP algorithm to prepare the table. Once you prepare the table, the algorithm is simple. Then I will take one example and show you how algorithm works. Let us look at the working of KMP algorithm. My explanation will be based on the tracing of an algorithm. So one thing you have to observe that here in the string, we will not backtrack in the main string. So let us start the working. So this is a pattern. So first of all, prepare a pi table or LPS, so prefix table. A, this is appearing here, so this is 1. The D is also there, so 2. Then the D is not matching here. So not just 2 alphabets are matching. So take this as 0, this and this, all are zeros. So let me put it in a table like this. And also give indices 1, 2, 3, 4, 5. And also I will take one index 0 that will act as a starting point of a pattern. Now let us start. First alphabet, I is there. Then where is J? Now it is not on the first alphabet, we will take it on 0. This is a special thing. Now it is not on the first alphabet, we will take it on 0. This is a special thing. You can start from here also, but the working will change a little bit. I am starting from 0. This is easy. Let us watch. J is on 0, I is on 1, first alphabet. Now compare this string of I with the pattern of J plus 1 being here. Check the next alphabet. They are matching. If they match, then move J as well as I. Now again compare string of I with the pattern of J plus 1, this alphabet. So wherever J is pointing, you try to check the next alphabet. Thus B is matching here. So take J on the next and I also on the next. Now this J plus 1, yes, this is matching. This is matching J plus 1. So move J as well as I. Now J plus 1 is B and I is B. They are matching. So move J as well as I. Now J plus 1 is not matching with I. So now there is a mismatch. What to do? Observe it carefully. When there is a mismatch with J plus 1 and I, then move J to this index 2. Bring J here. Move it here. This means that this AB is repeating. So AB came 2 times. So already we have checked 1 time. So maybe we have to start from here. So let us observe. Now J plus 1 with this one. Is it matching? No, still there is a mismatch. So again move J to this place. J is here. Now, is it a match with J plus 1? No, still there is a mismatch, but J is on 0, so we cannot move J further, so move I.
So in case of mismatch, you observe that only J is moving, I is not backtracking. I has simply moved to the next alphabet. Let us continue. J plus 1 is a match with this I, so move J, move I. J plus 1 B and I is B, match, so move J and move I. J plus 1 and I, C, A, mismatch, so move J to this place, J. And still compare J plus 1 A and I, mismatch. Now there's a mismatch and even J is at 0, so we cannot move J further on the left. So just move I. Now here's this part you observe carefully. 9 rupees. J plus 1 A, I, this is matching. Move J, move I. Just I'll mark here. Now J plus 1 is B and I, they are matching. So move J and move I. J plus 1 is A and I is A, matching. So move J and move I. J plus 1, that is B and I, they are matching. So move J and move I. J plus 1 is D, but this is A, they are not matching. They are not matching. Then where to move J? At 2, 2. Then again compare. J plus 1 A, match, match. See, AB, AB. So AB, already this portion is AB and this is also there here. So we need not compare that. We can continue from this portion. Here this was a mismatch. You can again start from the beginning. Means we reach till here, means this AB have came 2 times. That came 2 times. So one time you can skip and the second time onwards you can continue checking. So J plus 1 is matched with that one. So move J, move I. J plus 1 matched with that one. So move if the beginning and time. How many alphabets? N. So N is the time taken for parsing through this string. Then for preparing a table we have parsed for this one. So how many alphabets here? M. So for preparing table M, and for searching a pattern N. This is for a table, that is pi table, and this is for search. So the total time is M plus N. So this is one of the faster algorithm for pattern matching. Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita, and in this video of string matching, we are going to discuss about KMP algorithm. Just to give you an insight of what we are doing. हम बात करते हैं string matching की कि अगर एक string दी हुई है and एक pattern दिया हुआ है and we have to find whether this pattern is there in this string or not. तो उसको find करने के लिए what are the solution? Well, given the fact that this is the shortest palindrome we can form, remember what a palindrome is. With 2 pointers, we can basically say that these 2 are the same and check them off, shift the pointers inward. These 2 are the same thing, just keep going. By that definition, if this is the smallest string that we could add to the beginning of this input string such that the whole thing is a palindrome, that basically means that first of all, this prefix, what I'm going to call it, this is of length 1, so it matches the suffix, the string starting from the end, of also length 1, and if those match, then the subproblem becomes the inner string, and if this was the shortest string that we added, therefore the inner string was already a palindrome. So, in other words, another way to think about this problem is find the longest string starting from the beginning of the original string that is a palindrome, and this is the longest one. So once we identify this is the longest prefix of the original string that is a palindrome, then we say that all we need to do to make the entire thing a palindrome is just take this ending. We did not have a matching portion for the ending of the string, for the suffix of the string. So we take that portion and we create a copy of it and we append it, well, prepend it, I guess, to the beginning of the string. And that's the palindrome. So this is a little bit clever, but honestly, I don't think this itself qualifies as a hard problem, like this solution itself. This is more of a medium. The main thing of identifying this solution was just taking this problem and realizing that this problem is actually more simple than they describe. What we're really just looking for is the longest palindromic prefix of the input string. Now, how do you find that? Well, the brute force would be start at the beginning. Is this a palindrome? Well, actually, I guess a better thing would be to start at the end of the original string and say, okay, well, I want to know if from here to the beginning, is this a palindrome? How would we do it? Well, a linear time algorithm, possibly a 2-pointer approach. That's one way to do it. And if we find that this is a palindrome, okay, great, we're done. Now, if it's not a palindrome, well, let's try the second largest string, the second largest one ending here. So starting from the beginning, is this a palindrome? Well, yes, this time it actually is. So what do? Well, this was the index, let's call it the right pointer, where we found the palindrome that ends here, the longest one. So we take every character after that, create a copy of that string, add it to the beginning. What does it really take to lead in tech today? Is it mastering AI? And not just that, we would actually have to reverse it as well. Let me just kind of create a quick example to show you that. For example, this input string, 3x's, so this is where the longest palindrome will end starting from the beginning. So what do? Well, we take the remaining characters to the right of it. Don't just copy them to the beginning. That wouldn't result in a palindrome. Take the copy and reverse it and then add it to the beginning. So we get BA,
that results in a palindrome. And that's more or less it for this problem. Now you can kind of see that in the worst case, if we're going to check every single ending position, that's O of n. And to check each ending position, we need to check if that prefix is a palindrome. That's O of n. That's n squared. And I mean, theoretically, to create the output, we kind of are going to have to create a temporary string. So I guess even that could be considered O of n space. But anyways, this is a simple solution. Let's code it up. So first, I'm just going to very quickly have a function that determines there's down here, nothing crazy for right in range, length of s, but remember, I kind of want to start from the end, so I'm going to actually reverse this range. You can learn this in the Python for Coding Interviews course if you're not familiar with the syntax. It's on NeetCode.io. But now what do we want to do? We want to know if the string ending at index r is a palindrome. Well, we have a function for that. Is pally, given the string s, starting from the beginning, index 0, and going up until index right, if it's a palindrome. This is the longest one that we found. It's the longest one that exists, so we want to return. Now, if we never find a prefix that's a palindrome, that would actually only occur if the input string is empty, which I guess actually is a test case. That's kind of annoying, but whatever. It would actually only occur this, so we want to return right if it's a palindrome. This is the longest one that we found. It's the longest one that exists, so we want to return. Now, if we never find a prefix that's a palindrome, that would actually only occur if the input string is empty, which I guess actually is a test case. That's kind of annoying, but whatever. Down here, let's just return an empty string, because I guess technically an empty string is a palindrome. But anyways, here, what do we want to return? Well, we want to take the original string s, and to it, we want to add the reversed suffix. So that's what I'll call it here. The suffix is going to be the string starting, I'm going to slice it. You can also learn this in the Python for Coding Interviews course, from right plus 1. So right after that index, and we're going to go up until the end of that string. And then I want to take this and reverse it. The easiest way to do that is here, I could do : -1. I guess I'll just do that down here just to make it technically correct, because this is the suffix. And then that suffix, we are going to reverse it in line and then add that to the string. So that's the whole code. N squared. Oh, that's funny. This time it actually gives me time limit exceeded, but I promise you the solution actually did work earlier. Here, you can see I had pretty much the same solution and actually did pass. So anyways, but that's okay because we're not done yet. I know you want to see the optimal solution, and that's what I'm going to show you. So there's actually several solutions that could be solved in linear time for this problem. KMP does come to mind in solutions. I know you want to see the optimal solution, and that's what I'm just copy. Well, let me just pointer where we found the palindrome that ends here, the longest one. So we actually have to now you check each decrement going up until input string is empty, which I guess actually is a palindrome. But anyway, suffix. Also learned this in the Python for Coding. That string, search for it on honest look at it, and I realized that actually my explanation was more one I was going to solve in linear time for this problem. KMP does come to mind, and honestly, that's the one I was going to do for this problem. I recorded it, I looked back at it, and I realized that actually my explanation was more complicated than one I've already done in the past. So honestly, if you want to learn the KMP algorithm, I do have a video for it. You can just search for it on YouTube. I will tell you though, it is a 35-minute video. And if you're thinking, damn, 35 minutes to understand this really hard algorithm, no, don't jump the gun. Honestly, I don't think you're going to be able to understand it in 35 minutes. It's an extremely complicated algorithm. Even people who think they understand it, I'm not convinced. I'm pretty sure most people just memorize this algorithm. And I think the people who think they understand it are just fooling themselves. They're just lying to themselves. It's not something you understand very easily. The intuition is insane. I'll be showing you the Rabin-Karp algorithm. I'm not sure if I'm pronouncing that correctly. I think conceptually it's a more simple algorithm. So let's do that one. Thankfully, there is an alternative. This is how it's spelled. I don't know if I'm pronouncing it correctly, but it's basically a hash algorithm. It's conceptually very, very simple. The idea is this. I have my input string here. I take the reverse of that string and I have it here. So just so you realize, I literally reversed the string. So this is the string now. Like just take every character, put it in the opposite spot. I know they look very similar, but no, it's technically reversed. This one started with 2 A's, ended with 3 A's. A string comparison algorithm. Let's not even get into hashing just yet. Imagine like I'm counting prefixes from this string and I'm counting suffixes from here. So I check these two, they match. I check these two, they match. I check these two strings, they match.
Now, eventually we'll get to this spot and we'll get to this spot and we'll find that this was the largest prefix that matched the suffix of the reversed string. What does that tell us? That tells us this is a palindrome. Why is that the case? Because if you take a string, let's say ABA, and you reverse it, it's still ABA. That must mean it's a palindrome. Reversing a string is another way of determining that it's a palindrome. You don't necessarily need the two-pointer approach. That's going to be very relevant here. That's why we know it's a palindrome, because it matches the suffix. And remember, this entire thing was reversing the input, and all these characters ended up in this position. So if this matches that in the reverse order, it's a palindrome. So now you believe me that by matching this with this, we can determine if this is a palindrome. Okay, but the way I've talked about this, it's still going to be an n-squared algorithm, because comparing a string of size n with a string of size n, first of all, we're going to have to slice it. That's going to be a linear time operation. And then the comparison is going to be a linear time operation. And we're going to continuously do this. It's going to end up n-squared. Well, the trick here is that actually a string can be converted into an integer. And now that's what I'm going to be talking about, the hash part. You guys see this number over here, right? This is a base 10 number. And you could have a number like this. It's a base 2 number. Base 10 means that this spot is the ones place, right? In other words, it's counting 10 to the power of this is the term, but I don't really know. But we want to coding or serial 100. What we want to do is take this, and you could call it encoding or serializing this. I think encoding might be the better term, but I don't really know. But we want to basically convert it into an integer. Given the fact that the input string is going to be lowercase a through z, at the very least, what we want to do is have a system where each character will be mapped to a specific spot, and like that should not overlap with this one. These two numbers, they should be independent of each other. And if we want that to be the case, we at the very least need a base 26 system. At the minimum, we need base 26. Now, generally, this algorithm is actually implemented with a larger base, because with this algorithm, there actually can be collisions. We'll talk a little bit about that later on, because it's on the aspect of it. Let's encode this into a base 26 integer. Because the comparison, that's the number initially starts as 0. The mapping that we use, lowercase a, usually we'd map that to 0, and then lowercase z would be mapped to 25, and then everything in between. But given that our number starts at 0, how do we distinguish between an initial 0 and an a? Well, for that reason, we're going to actually start our mapping at 1. So a will be mapped to 1, z will be mapped to 26. Relatively easy to create that mapping. I'll show you in the code. Assume we have that mapping. What do we want to do? Well, in this example, it's 1, so we want to set it to 1 now. Just add 1 here. Okay, so we get the 1 there. Now we have a over here. So what do we want to do? Well, we want this in terms of like the integer to look like this, 1, 1. But remember, this is not binary, nor is it base 10. This is base 29. So what this itself represents is the fact that we have 129 and we have a single 1. So the way to do this would be to take everything we have, shift it to the right. But remember, this is not binary. We can't actually do bitwise shifting. So how do you actually shift that to the right? Well, you know how in base 10, if we want to shift this to the right by 1, we just multiply it by 10. The same thing down here, multiply it by 29. So now it will look like this down here. Well, you know how in base 10, if we want to shift this to the right by 1, we just multiply it by 10. The same thing down here, multiply it by 29. So now it will look like this, 1, 0, and then we'll take the 1 here and then add it there. And I'm just going to continue one more time. So once again, we're going to shift this to the right and we'll get 1, 1, 0. We'll take this, it maps to a 3, add that there. So now this is what we have. We started with a 1, then we had 1, 1, and now we have 1, 1, 3. Now we want to kind of do the same thing with the reverse, because we want to recognize that this prefix matches this prefix, and we want to eventually recognize that this prefix matches this suffix. Sorry, I said prefix a second ago. How can we do that? Well, it's actually not that complicated. The reason for this one, we're shifting everything to the left, is because like here we have 1, 1, 3, and now we want to add this to it. I think that's going to be 5. So we have to shift it to the left to make room. Here we're going to kind of do the opposite. Okay, we have a 1 here. Great. Now we have a, it's a 1. So instead of shifting everything we have to the left by 1, just take this guy. It represents 1. So shift it to the left, or in other words, multiply it by 29. Great. So now we have a 1 here. Now C, let's say that's a 3. We want it to go in the third spot. The ordering does matter, because that's how we know that this is the same as this. So basically what we do is we take that 3. If we were to multiply it by 29, that would give us this spot. This time we actually want to multiply it by 29 squared, because remember, this spot represents 29 to the power of 0. This spot represents 29 to the power of 1. Track of that, I guess, which I'll call the power. We could technically use the index I that we're going to be using like as the iterator, because this is index 0, this is index 1, this is index 2. We could technically do that, 29 to the power of I, but it's probably easier just to start out with 1 and then take that and multiply by 29 each time, which will give us something like this, and then here we'll get 29 to the power of 3, etc., etc. Hopefully you have a little bit of the intuition of the math now. Almost done. Sorry, I'm just a little tired if I sound annoyed. Here, of course, we would have seen that these two match, but clearly this does not match that. So this is not a palindrome, but we're going to keep going. We're going to see this is a 5, this is a 5. These don't look the same to me. We're going to see that this is a 3, this is a 3. Once again, this is not the same, but we get a 1 here and we get a 1 here. These are not the same numbers, but I add one more 1 here. I add one more 1 here. Now I see this number is the same as this one. So this is the longest palindrome we've seen so far. Make sure
to remember the index that it ended at, similar to the previous solution, because once we're done, we're going to take everything to the right. This is the suffix. We're going to reverse that, and we're going to add a copy of it to the beginning, and then we're going to say this is our result. So hopefully conceptually this algorithm makes sense to you now. It's much more simple than KMP, but if you enjoy suffering, I mean, I do recommend you go watch that video too, but I'm going to try to keep it simple for today. Okay, so I'm going to now start with a couple of variables. One is the prefix hash, like the integer that represents the prefix string, and Okay, I just realized I was muted the entire time. But it's fine, right? I probably was not even speaking. Okay, whatever. Was probably not even speaking, it's fine. Anyways, wait to black. we're going to have a suffix for the same reason. We're going to be doing this base 29, though you could use a different number and it'll probably still work. And I'm going to record the last index. Let's just call it that, last index. And I could set it to 0 initially, but remember the way we're going to implement the code. We're going to get the suffix, assuming that it ends at the last index. So we'll start at last index plus 1, and we're going until the end of the string. So that's the suffix, so that'll actually be this. And then we're going to return s plus the reverse of the suffix. So like that. The problem with this approach is if the input string is empty, I think we're probably going to have issues with this. I'm actually not 100% sure, so maybe we'll just run it and we'll see, but I'll leave a comment here. I think this should be starting at -1, because I think we'll get an index out of bounds error here, or maybe not. Anyways, now we want to go through the input string. I'm going to use enumerate in Python. It's pretty nice. Gives us the index and the character at the same time. And then I want to create that mapping, which I told you is pretty easy, and I did not lie. We can just take the ASCII value of the character, subtract from it the ASCII value of lowercase a. Now this would create a mapping where a would map to 0 and z would map to 25, Yes. but we want to just add 1 to that mapping. So just offset it by 1. Remember, for the prefix, we just want to add to it the current character. But before we do that, we potentially want to shift the prefix to the left by 1. We can do that by multiplying it by 29. So let's do that. Prefix multiplied by the base. Initially, the prefix is 0, so multiplying it by the base isn't going to do anything. So that's why this works out. And we're going to do something similar down here for the suffix. Suffix is going to be added with the current character multiplied by 29. But this is a bit misleading because the first time it'll just be multiplied by 1. The next time it'll be multiplied by 29. The next time it'll be multiplied by 29 squared. So what we can do is Right, thank you. Hmm. Yes. is something like this. Call it the power. Initially it's 1, multiply it by the power, and then for the next iteration of the loop, just update the power by multiplying it by the base. Great. And then at Oh. the end, if the prefix Hopefully the audio should be working fine. Working fine. the power by multiplying Okay, great. is equal to the suffix. Well, not at the end, at every iteration of the loop, we will check that so that we can Are you a tech professional with 7+ years of experience and want We can find the longest palindrome. record the last index. So at this point, we'll say the last index was I. So great, we're almost done, I promise. The only thing is that by doing it this way with a relatively large string, this number in some languages
could overflow. So to handle that, we can mod it by a really large prime number, 2 which power is smaller than 21. base 32. And one common number people use is 10 to the power of 9 plus 7. So this is basically 1,000,007,000. It's a prime number and it's smaller than a 32-bit integer. So to make sure that we don't ever overflow anywhere, here I'm going to mod it by the mod. Here I'm going to mod that by the mod. That's why I put parentheses around everything I was anticipating, and mod this, and then down here mod this guy as well. Now theoretically, there could be a collision given the fact that eventually we are going to mod this. Like for small input strings, there probably wouldn't be a collision, but given the fact that we're modding this, we could end up with two different numbers, two different prefixes and suffixes, and then at some point after we mod it, we end up eventually having the same prefix and suffix, like it was the same remainder, but the original values were not necessarily the same. So that would give us a false positive. We'd see that we found a matching prefix and stuff, not necessarily. So what multiplied by 1, the next time 20 multiplied by the base, initially the prefix is 0, so multiplying it by the base isn't going to do anything, so that's why this works out. And we're going to do something similar down here for the suffix. Suffix is going to be added with the current character multiplied by 29. But this is a bit misleading because the first time it'll just be multiplied by 1. The next time it'll be multiplied by 29. The next time it'll be multiplied by 29 squared. So and then for the next iteration of the loop, just update the power by multiplying it by the base. Great. And then at the end, if the prefix is equal to the suffix, well, not at the end, at every iteration of the loop, we will check that so that we can record the last index. So at this point, we'll say the last index was I. So great. We're almost done, I promise. The only thing bit integer. So to make sure that we don't ever overflow anywhere, here I'm going to mod it by the mod, different prefix and suffixes, and then at some point after we mod it, we end up eventually having the same prefix and suffix, like it was the same remainder, but the original values were not necessarily the same. So that would give us a false positive. We'd see that we found a matching values were not end up eventually having different numbers. There probably wouldn't be a collision, but given the fact that we're modding this, we could end up with two different numbers, two different prefix and suffixes. And then at some point after we mod it, we end up eventually having the same prefix and suffix, like it was the same remainder, but the original values were not necessarily the same. So that would give us a false positive. We'd see that we found a matching prefix and suffix when maybe it doesn't actually exist, and we would erroneously
erroneously set this to I. Now, one potential fix for that is to verify here, because theoretically this should not occur very often. In that case, here we could verify that the original string, like the actual prefix, not the hash, but the actual prefix matches the actual suffix, but that is obviously a linear time operation. So if this were to execute every single time, potentially in the worst case, for a string that just has like the same character in every spot, that would not be very efficient. So for that reason, I'm not going to put it there, but that would technically make the solution more correct, but less efficient. So let me run this now. You can see it works. It's pretty efficient. I hope you guys believe me now when I say that I make these videos for fun, because if you just go through the list of videos I have, you can see that if I really wanted views, if all I cared about was money and subscribers and views, I'd just make these random reaction videos, which get like 100,000 views, whereas the LeetCode videos get a few thousand views. But you guys know that I actually genuinely enjoy doing this stuff. So if you also enjoy it, feel free to like, subscribe, and maybe check out neetcode.io. Have you Okay, I kind of understand like this algorithm. Let's see. Hmm. We just need to find the index till which the prefix and the suffix matches, right? Once that is true, we have the index till which the prefix and suffix matches, and then we can just reverse the remaining indexes from index plus 1 till the end, reverse it and add it in the bin. That's it. So int I, no, int n equal to int prefix, int suffix. We have int base. We can take this as any value. I can take it 26 as well. Let's take it 26. Int power equal to 1. Okay. Int prefix, prefix equal to, what do we have here? We multiply the actual prefix with 29 and add the character. Uh, add the character value. Char equal to s dot char at I minus this plus 1. So we have prefix into base plus our character value. Hey everyone, welcome back, and let's write some more neat. Yeah, perfect. Also add a mod 1 2 3 1 2 3 1 2. Yes. We have suffix. For suffix, what do we do? Suffix plus suffix plus the character into, oh wait, this should be ch,
because char is a keyword. Ch into power and hmm, hmm, कळलं काल झालेलं तसं काल झालेलं मम्मा बंद करून चालू करून बघ बंद करून चालू करून बघ ते होणार ते केक व झालं पण असेल आता नाव होतं ब्लिंकात अजून पॉवर इक्वल टू power into base. Now check if prefix equal to suffix, then last index equal to I, and last index equal to that's it. Now we have a string named end, which is from s dot substring last index plus 1 till the end, and string reverse equal to end dot reverse. Now return rev plus s dot char at 0 till last index plus 1. That's it. We should be good. Do we not have a dot reverse function? Oh, this should be substring. I know we have a reverse function in string builder, but in string also we should have, right? Oh my god. Okay, whatever. Just convert this to a string builder end dot reverse dot to string, and we should be good. Oh my god, this is not. Why is it reversing this?
Oh, wait. Yeah, that's index plus 1. No, 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 no. Plus S. The entire S. Yeah. Mhm. Oh, oh. If string is empty, decline into string. In some languages, could overflow. So to this, like for we found a matching prefix, like the actual prefix, I'm not going to put it there. Fun, because if you just go through, actually make the solution. If S dot equals empty string, decline string. Okay, so while multiplying, mm, okay. Mm,
Oh, hmm. Palindrome partitioning. Okay. When a string is partitioned is such that every substring of the partition is a palindrome return all possible palindrome partitioning of S. Okay. So I have to use recursion here. Um, this will take a string and array list of this will have an empty string list. This is temp. If um we'll also have I, which is the partitioning index. If I reaches s dot length, or rather n, then perform certain things. We check if is palindrome. We send this temp. If this returns true, we add it to our result. This is list of string result. Yeah.
What will is palindrome return? Public Boolean is palindrome. Now for int I equal to 0, I less than temp dot length. Int can equal to plus I plus plus. For this character, string s equal to temp dot get I for int L equal to 0. No, no, no. Yeah, L equal to 0. R equal to s dot length minus 1. While L is less than equal to R, we check if s dot char at L is not equal to s dot char at R. We straight up return false. Else L plus plus R minus minus. Right? I do want to check this. Yeah, DP backtracking, yeah, of course. Now, what we do is we find all the different possibilities. So, if we start at A, we take this, right? Okay. For take condition, we do temp dot add s dot char at I. But how do I get all the substrings as well? How can I generate all the substrings? I mean, I know how to do it, I just don't remember. This, then O of S, I plus 1, this is move on to the next, and then list, oh no, and then temp. This is S, take this again, and this. Take again. Let's write for step O is S, I plus 1 temp. Oops. And
before this temp dot remove. How do you remove from a list? How to remove uh, from a list? Is it delete or is it just remove? I guess it's delete. In Java. Oh, it's remove. Remove this index. This should be void. Who is S? I will be 0. New array list. Return result. Oh, this is size. S dot caret 932. Caret type. Char cannot be converted to string.
Yeah, from start to end. This listing is if it is a palindrome, chem.add nested substring. Ah, okay. And if it's a palindrome, so if ever it returns false, just break at that point. Chem.add, then this n plus 1. Uh, why do you do n plus 1 though? Do you do n plus 1? Print. Hmm. Yeah, why would you do n plus 1 here? The current substring ends. Yes. Issues. Yes. The next piece must start after end. Okay. Then, okay, so we have selected up to A. We have to like basically up to 0th index, then go to the first index and find its palindromes. Okay. We don't have to do all of this. For j equal to I, j less than n, j plus plus, f is palindrome. It will This palindrome will take in the s, I and j. Or s, I and j. Try to do this. No. Okay. This will take the string. This will take L and R. This is string S, int L, int R. String S equal to so multiply this will okay. Okay. If this the starting index I Indian index, if this is a palindrome, then yeah, dot हाँ हाँ लो एक मिनट एस हो एकच मिनिट J plus 1
Okay, now we increase the ith pointer in temp, and then while backtracking, just remove this index, right? Remove temp dot size -1, the last index. Can I write end instead of this? Here. Okay, let's see. This one previously did. Okay. Yeah. Temp dot remove temp dot size -1. Now this temp pop. Do we need to check this here? No, right? Think we need this. Let's check this Berlin drone. Okay, I'll fix that later. I need to go. My mom's calling. I'll be back soon. Wait, to black. Okay, I'm back. I just saw some messages from my college friend. अरे यार. Oh, you cannot see this. Yeah. Oops. Atharva Savle. Nice. He is my college friend. Yeah. I'll be back soon. Fade to black. Oops. Fade to black.
Mm, okay.
Mm. Mm.
Given a string S and we want to partition it in such a way that every single substring of the want to partition it in such a way that every partition is a palindrome, and we want to return all possible ways that we can partition it in, like, by following this rule. And if you don't remember, a palindrome is basically a string because in this case we have A is a partition over here. Other than second partition, we'll have two substrings, right? AA and strings that are palindromes, right? AB is not a palindrome. If you reverse it, we get BA. That's not a palindrome. So the brute force way in this case to solve this problem happens to also be the main way to solve this problem. And what we're going to do is create every single possible way we could partition this and then check if those partitions form palindromes. And if they do, we're going to add them to our result list, right? Because ultimately we want a list that has every single partition. We have three choices. Do you see what they are? If we want a first partition, well, the first partition can either be A by itself, right? So A by itself, which is if we just took the first character and said that that was one partition. Another partition is double A, right? If we just took the first two characters as our first partition. Or the last one, obviously, if we just took the entire string as our first partition. Now, we will check, is this a palindrome? How are we going to check? Well, we can start comparing the first and last characters, right? And we see that, well, they're not even equal, right? So this is not a palindrome. So we are not going to continue on this branch or on this path for our depth first search tree. But we know that this by itself is a palindrome, right? So this is going to be and try. We could get a single A if we took this first one. Partition of those B and try first partition itself is a palindrome, right? So this is going to be our first partition. Now we're going to take the remaining characters A and B and try to partition them, right? So for one partition of those remaining characters, we could get a single A if we took this first one. Another partition we could get is A, B if we took both of these characters. But we look at the first character and last character. This is not a palindrome. This is a palindrome, but this is not a palindrome. So we don't have to continue on this path. And from here, we know we already took the first two characters as our first partition. So we only have one choice for our second partition, and that's just the character B. And we know a single character by itself does form a partition. And we also know that we have no more remaining characters, right? Both. Now the only took the first, so B is the solution. This is what's going to store all of the partitions that we hold partitions in it. Our backtrack at happens to be out of, well, valid partition, and we had no more character. Going to do here, not like there are multiple to result case. If we have character S, is this a one deck? So right, this going to iterate through every other character in our string, right? So we're going to Can't trust your Hey everybody, this is Lebo Enjoyment, and hope you about like a quarter of the way through. So let's search for a palindrome partition of S. So yeah, the shortest path. The tricky thing is that there can be a lot of these quote-unquote edges. So for example, if everything's the same, then you like if it's all A's. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन। तो याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी वीडियो होने वाला है। डीप स्ट्रिंग बेस्ड डीपी चल रहा था और उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया था, और आज का वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में कर ली हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, प्रिंट एलसीएस, एडिट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, प्रिंट एससीएस, फिर पैलिंड्रोम रिलेटेड जितने भी डीपी प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें एक मस्त हमने ब्लूप्रिंट सीखा था, और उस ब्लूप्रिंट की मदद से काफ़ी प्रॉब्लम्स बनाए थे। तो हमने लास्ट वीडियो करा था पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 पे, आज हम लोग करेंगे पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2 पर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले खानदानी तरीका रिकर्शन मेमोराइजेशन से ट्राई करेंगे, उसके बाद बॉटम अप से करेंगे। ठीक है, और सिंस ये पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली ये ब्लूप्रिंट हम जरूर ट्राई करेंगे जो हम ब्लूप्रिंट कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे किसमें, पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम्स में। तो सेम ब्लूप्रिंट इसमें लागू होना चाहिए, तो ट्राई करेंगे उसी से। ठीक है, प्रॉब्लम का कौन सा है, लीड नंबर 132 हार्ड मार्क्ड है, बट आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी होगा, और स्पेशली अगर आपको ब्लूप्रिंट ऑलरेडी आता है तो आपके लिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये। पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2, गिवन अ स्ट्रिंग एस पार्टीशन एस सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम। कोई भी आपको मान लेते स्ट्रिंग दे रखा है, मान लेते हैं आपको दे रखा है ए बी दे रखा है, तो आपको इसको पार्टीशन करना है सच दैट जितने भी पार्टीशन में आपने इसको बांटा है वो सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए। जैसे आपने मान लेते हैं इसको तोड़ दिया ए में और ए बी में, ठीक है, तो एक पार्टीशन करनी पड़ी होगी उसके लिए, राइट। यहाँ पर एक आपने पार्टीशन किया होगा, तो एक ए मिला और एक ए बी मिला, बट ये पार्टीशन गलत है। क्यों? every single A is
palindrome partition over the palindrome, we can do the remaining characters over the palindrome, we can do the remaining characters दैट जितने भी पार्टीशन में आपने इसको बांटा है, स्ट्रिंग दे रखा है, मान लेते हैं आपको दे रखा है ए बी दे रखा है, तो आपको इसको पार्टीशन करना है सच दैट जितने भी पार्टीशन में आपने इसको बांटा है वो सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए। जैसे आपने मान लेते हैं इसको तोड़ दिया, क्योंकि देखो ए तो पैलिंड्रोम है, समझ में आ रहा है, बट ए बी पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। तो आपको फर्दर ए बी को भी तोड़ना पड़ेगा, तो ए बी को फर्दर तोड़ोगे तो ए और बी में टूट जाएगा। तो फाइनली टूटा किस में ए में और बी में, ठीक है। और आपको पार्टीशन कितना करना पड़ा, पहला पार्टीशन जब आपने किया था यहाँ पर, दूसरा पार्टीशन आपने यहाँ पर किया था, आपको 2 पार्टीशन लगे, ठीक है। बट इसका बेटर सोल्यूशन भी हो सकता है, मान के चलते हैं आपने इसको यहाँ से पार्टीशन किया होता तो 2 हिस्सा मिलता है, एक ये और एक ये, ए और एक बी मिलता। देखो दोनों पैलिंड्रोम है, आपको यानी कि फर्दर पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है ना। तो सिर्फ एक पार्टीशन में आपको ऐसे पार्टीशंस मिल गए, एक ये और एक ये, जिसमें दोनों पार्टीशन पैलिंड्रोम है। आपको करना वही तो है, पार्टीशन एस सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग, जैसे आपको आपने पार्टीशन किया तो ये एक सबस्ट्रिंग निकल कर आया और ये निकल कर आया, तो ये लोग भी पैलिंड्रोम ही होने चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम कट्स होने चाहिए, मिनिमम पार्टीशन होने चाहिए, राइट, है ना। देखो यहाँ पर पिछले टाइम मैंने जो पार्टीशन किया था उसमें आपको यहाँ पर भी एक करना पड़ा था पार्टीशन, फिर इस ए बी में एक बार और पार्टीशन करना पड़ता, तब जाके सारे पार्टीशन पैलिंड्रोम हुए थे। तो उसमें आपको 2 कट मारने पड़े थे। बट अगर आपने यहाँ पर कट मारा होता तो देखो ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, तो मेरा लाइफ इधर ही सेट हो गया, सारे के सारे सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम निकल कर आ गए। तो मुझे बस एक कट करना पड़ा, तो मिनिमम कट क्या निकला, 1 कट, है ना। इसलिए यही पूछा कि मिनिमम कितने कट्स लगेंगे सच दैट सारे सबस्ट्रिंग। Mesa School of Business, India's first startup-focused business school. Our campus एस के जो टूटे हैं वो सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। देखते हैं पहला एग्जांपल देखते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी है ना, इसमें एक कट यहाँ हमारे को, तो देखो ये सबस्ट्रिंग ए और ये सबस्ट्रिंग बी दोनों पैलिंड्रोम निकल आ गया, यानी कि सिर्फ एक कट की जरूरत है, हमारा आंसर 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ए बी है, भाई ए बी एक कट से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ए बी सी बी है, तो ए बी सी बी है, यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ एक कट से आपका काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपने कट मारा पैलिंड्रोम, यानी कि बनाएंगे हमारा खानदानी तरीका डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ओके। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक बार इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स, ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बट यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो फर्दर ना चाहते हुए भी आपको इसको 2 कट में काटना पड़ा, राइट। अपने बीच में यहाँ एक पार्टीशन मारना पड़ा, जिससे ये ए में टूट गया और बी में टूट गया, ठीक है। तो फाइनली अब तो फर्दर आप इसको तोड़ नहीं सकते, ये तो एक ही कैरेक्टर है, तो फाइनली आपने इसको 1 2 3 हिस्से में तोड़ दिया, और अब 3 हिस्से में तोड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको 2 कट मारना पड़ा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसका इस वजह से आया आंसर 2। बट फिर बाद में आपने रियलाइज़ किया कि अगर आपने कट यहाँ ना मार के इधर मारा होता ए बी, ठीक है, अगर मान लेते आपने कट यहाँ ना मार के आपने कट इंडेक्स नंबर 1 के बाद मारा होता, यानी कि यहाँ पर मारा होता, तो क्या होता, ये ए में टूटता और ये बी में टूटता, बी तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। बट यहाँ ए देखो ये भी पैलिंड्रोम ही है, तो देखा है, तो यहाँ पर भी कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, कोई पार्टीशनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी पार्टीशनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पैलिंड्रोम है, तो इधर से रिटर्न हो जाओ, यानी कि आपने यहाँ पर इधर आपने 0 पार्टीशनिंग करी, इधर भी आपने 0 पार्टीशनिंग करी, क्योंकि दोनों पैलिंड्रोम है। बट यहाँ स्टार्टिंग में आपको बस एक पैलिंड्रोम करना पड़ा था, तो यहाँ पर एक 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ एक ही पार्टीशन करना पड़ा, तो देखो यहाँ पर आपने इंडेक्स नंबर 0 पर पार्टीशनिंग करा और एक बार यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पार्टीशन नहीं करा, तो आपका ऑप्शन है ना कि आप या तो यहाँ से पार्टीशनिंग करो या तो ना करो, दोनों ऑप्शन आपको ट्राई मार के देखना पड़ेगा, जहाँ से आपको मिनिमम आंसर निकाल कर आए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये रियलाइज़ हो गया कि अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन है कि मैं कोई भी इंडेक्स में, हर इंडेक्स पे जा जाके एक बार वहाँ पार्टीशन मारूंगा और ट्राई करूँगा, जो आंसर आया फिर एक बार पार्टीशन वहाँ नहीं मारूंगा, फिर वहाँ से जो आंसर आएगा दोनों में से मिनिमम निकालूंगा, जैसे हमने यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पार्टीशन मारा और यहाँ पार्टीशन नहीं मारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे इस इंडेक्स पर आपने पार्टीशन मारा है यहाँ पर, है ना, इधर मारा, एक और केस हो सकता है कि आपने यहाँ पर नहीं मारा था पार्टीशनिंग, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, इसीलिए अगर ऑप्शंस है तो ऑब्वियसली बात है हमें रिकर्शन हम लिख सकते हैं, राइट। हर ऑप्शंस को ट्राई मार के आंसर निकाल लेंगे और उसका मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम कट्स जिसमें भी आए, ओके, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से, क्या था हमारा एग्जाम्पल, ए बी था ना, तो ए बी था, ये है 0, ये है 1, ये है 2, इंडेक्सिंग कर दिया मैंने, ओके। अब देखो ध्यान दो, पहले तो ये चेक कर लेंगे कि क्या ये पूरा स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम है ना। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक आई पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, एक जे पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई ये पैलिंड्रोम है क्या। अगर पैलिंड्रोम ही होता तो फर्दर कोई पार्टीशन करने की जरूरत ही नहीं, मैं इधर ही से रिटर्न कर देता, 0 पार्टीशन रिक्वायर्ड, ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। बट अभी ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट, तो हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्स नंबर 0 के बाद पार्टीशनिंग करो यहाँ पर, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर पार्टीशनिंग करी, ठीक है, तो जिस इंडेक्स पर आप पार्टीशनिंग करो उसको, उस इंडेक्स को के मान के चलते हैं, के इज इक्वल टू 0 पर आपने पार्टीशनिंग करी है, मतलब जस्ट इंडेक्स 0 को आप पे एक ऐसा लाइन खींच दिया इन 0 के बगल में, तो के इज इक्वल टू 0 पर आपने पार्टीशनिंग करी है, मान के चलते हैं। तो अगर 0 पर पार्टीशनिंग करी है तो यहाँ पर एक काउंट तो हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पार्टीशनिंग मार दिया ना, यहाँ पर एक पार्टीशनिंग मार दिया, तो यहाँ पर 1 काउंट तो होगा ही कि आपने एक कट यहाँ पर मार दिया है, ठीक है। बट कट मारने के बाद ऑब्वियसली ये फर्दर 2 सबस्ट्रिंग में टूटेगा, एक लेफ्ट वाला हिस्सा ए, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी पैलिंड्रोम हूँ, ठीक है। इसका देखते हैं, ये बोलेगा भाई मैं पैलिंड्रोम नहीं हूँ, तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, और ये ए बी एक सबस्ट्रिंग है ना, ठीक है, तो फिर से ट्राई मारेंगे हर जगह कट मारने का। तो एक बार यहाँ कट मारा हमने, अगर यहाँ कट मारा हमने तो ये ए बी हो जाएगा, सॉरी ए पे टूट जाएगा और ये बी पे टूट जाएगा, ए और बी पे, और ये दोनों ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो इसको फर्दर कट करने की जरूरत नहीं है, तो ये बोलेगा मुझे कोई कट करने की जरूरत नहीं, तो इसमें भी 0 कट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए बी को पैलिंड्रोम्स में तोड़ने के लिए एक कट की जरूरत पड़ी थी, है ना। लेफ्ट साइड से यहाँ 0 कट आया, राइट साइड से यहाँ 0 कट आया, बट यहाँ पर एक कट लगा था, तो लेफ्ट साइड से 0, यहाँ राइट साइड से देखो एक कट आया, ये वाला है ना, +1, और यहाँ पर भी हमने एक कट किया था, ये रहा, है ना, तो +1, यानी कि टोटल 2 कट्स लगेंगे इस पूरे स्ट्रिंग को, अगर आपने
अगर पैलिंड्रोम में तोड़ना है तो, और अगर आपने यहाँ पर कट मारा था पहला कट, तो किस किस कैसे कैसे आपने कट मारा होगा, एक दूसरा ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो अगर k इक्वल टू 1 है तो ये पैलिंड्रोम है ना। यहाँ पर देखते हैं भाई, ये भी तो पैलिंड्रोम है, तो ये भी 0 कट रिक्वायर्ड भेज देगा, रिटर्न कर देगा, क्यों, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, लेफ्ट साइड से 0 कट, राइट साइड से 0 कट, और यहाँ पर हमने एक कट मारा था तो उसके लिए +1 तो करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने एक कट मारा था ना 1, फिर लेफ्ट साइड से 0 कट आया, लेफ्ट साइड में जो भी आपने रिकर्शन कॉल किया होगा, और राइट साइड में जो आपने रिकर्शन कॉल किया होगा +0, टोटल 1 कट लगे और आपको पैलिंड्रोम में टूट गया, ठीक है। यानी कि ए बी जो था आपने सिर्फ एक कट मारा, और ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, इसमें कट कितने लगे, 1 लगे। तो ऑब्वियसली बात है, मिनिमम किससे आया, मिनिमम इससे आया, इससे इन दोनों मिनिमम किसमें आया, कट मिनिमम ये आया, तो आपका आंसर ये होगा, कट इक्वल टू 1, ठीक है। तो याद करो हमने कहाँ कहाँ ट्राई मार लिया कट करने का, एक तो हमने ट्राई मार लिया k इक्वल टू 0 पर, यानी कि यहाँ पर, एक बार हमने ट्राई मार लिया k इक्वल टू 1 पर, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखो तो k इक्वल टू 0 पर मार लिया, k इक्वल टू 1 मार लिया, k इक्वल टू 2 पर भी कट मार सकते हैं क्या, देखते हैं, k इक्वल टू 2 पर कट मार सकते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं। ट्राई मार सकते हैं, जब हम कट मारेंगे तो k का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू पर अगर ऐसे कट मारोगे तो अब लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा, वैल्यू होगा k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और k कहाँ तक जाएगा, देख रहे हो, ये जो भी आई है j मान लेते हैं, k जो है j-1 तक जाएगा, 0 टू j-1 तक जाएगा, j कहाँ यहाँ पर है, ठीक है। वैसे j में तो इंडेक्स में 2 तक तो नहीं जा पाएगा, j-1 तक कट मार सकते हैं, है ना, j इक्वल टू सॉरी k इक्वल टू 0 हो सकता है, k इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, k इक्वल टू 0 पर ट्राई मारेंगे, k इक्वल टू 1 पर ट्राई मारेंगे, j इक्वल टू j-1 तक ट्राई मार सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हमें देखा जाए तो बड़ा सिंपल है हमारा स्टोरी, ये जो रिकर्सिव ट्री मैंने बनाया है, इसी रिकर्सिव ट्री को कोड में कितना इजीली कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, मैं सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है, और मैं बता दूंगा कि मेरा स्ट्रिंग s था और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि i है और एंडिंग इंडेक्स j पर है, ठीक है। और स्टार्टिंग इंडेक्स याद है क्या भेजोगे, 0th इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, n-1th इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने सॉल्व फंक्शन पे, ठीक है। ये इंटीजर रिटर्न करेगा, कितना कट लगा, सॉल्व स्ट्रिंग s भेजा हमने, i भेजा और j भेजा, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, पहले तो मैं यही चेक कर लूँगा कि भाई जो मेरा स्ट्रिंग है i से लेकर j तक का, अगर वही पैलिंड्रोम निकला तब तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि अगर यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देते हैं, Your game doesn't play the way it should? Perfect. Hobbies don't need to chase if is a palindrome s i से j, अगर s स्ट्रिंग s जो है ना i से j तक पूरा का पूरा पैलिंड्रोम है, तब तो कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, कोई कट मारने की जरूरत नहीं, कोई पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, 0 पार्टीशन करेंगे, रिटर्न 0 मार देंगे, नो कट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो कट रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर। और अगर ऐसा नहीं है, i से j पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कट मार सकते हैं, राइट। तो कहाँ कहाँ कट मार सकते हैं वो हम ट्राई मार लेंगे हर एक पॉसिबल पोजीशन पर, इन k इक्वल टू i से स्टार्ट करेंगे, और याद करो k कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू j-1 तक जा सकता है, k प्लस प्लस, है ना। यहाँ तक याद है, मैंने समझा था आपको, ये मान लेते हैं ये i है आपका, ये j है, तो k i अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, तो k इक्वल टू 0 पर आप कट मार सकते हो, k इक्वल टू 1 पर मार सकते हो, k लेस देन इक्वल टू j-1 तक कट मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, k इक्वल टू i पर कट मारेंगे, +1 पर मारेंगे, k इक्वल टू j-1 तक ही कट मार सकते हो, और वो मैंने आपको दिखाया ऐसा क्यों है, ओके। तो कट मार के देखते हैं, अगर मान लेते हैं आपने कट मारा तो एक कट मारने का 1 रुपया लगा, ठीक है, एक कट लगा ये, प्लस लेफ्ट साइड में जो आपका स्ट्रिंग है वहाँ से जितने कट्स आएंगे, वो सॉल्व फंक्शन में दोबारा कॉल कर दिया, लेफ्ट साइड निकालने के लिए। याद करो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग होगा उसके इंडेक्सेस क्या होंगे, आई और जे क्या होगा उसका, याद करो कैसे निकाला था, नहीं देखो, आई से लेकर के तक था, और राइट साइड में जो स्ट्रिंग था वो k +1 से लेकर j तक था, है ना। ऑब्वियसली बात है, ये i से लेकर k तक का होगा, क्यों, क्योंकि k पर आपने कट मारा है, तो k +1 से लेकर j तक का वो सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दिखाया तो हमने वही किया जो हमने ऊपर कोड में लिखा था, है ना। और इससे जो भी वैल्यू आएगा, इंट टेम्पररी रिजल्ट, और ऊपर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इसको इंट मैक्स असाइन कर देते हैं क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर असाइन करते रहेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा और टेम्प में अभी जो वैल्यू आया है, ठीक है। और जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा मैं रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, और रिजल्ट एकदम मिनिमम होगा, देखो यहाँ पर मैं मिनिमम निकालते जा रहा हूँ हर पॉसिबिलिटी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और रिकर्शन का यही तो ब्यूटी है ना, देखो लेफ्ट साइड में मैंने कॉल कर दिया, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये लेफ्ट साइड का मुझे निकाल के दे देगा मिनिमम कितने कट्स लगेंगे पैलिंड्रोम में तोड़ने के लिए, और राइट साइड में भी रिकर्शन मैंने हिट मारा तो मुझे ट्रस्ट है इस पर कि मुझे आंसर ले आएगा, इसी को बोलता है रिकर्शन लीप ऑफ फेथ, है ना। मुझे भरोसा कि आंसर निकाल के ले आएगा लेफ्ट साइड का, और ये राइट साइड का ले आएगा। और अभी जो मैंने कट मारा है k इक्वल टू kth इंडेक्स में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, ये तो कर रहे थे यहाँ पर, देखो ये रहा 1, तो यहाँ पर kth इंडेक्स में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, ये तो कर रहे थे यहाँ पर, देखो किया टेम्प में डाला और रिजल्ट में अपडेट करते गए मिनिमम रिजल्ट, लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये हो गया सिंपल सा रिकर्शन का कोड हो गया इसका, है ना। नॉर्मल सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और 2 पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, आई और जे, तो उसको मेमोराइज भी करना आसान है, एक 2D अरे ले लेंगे, 2 इंडेक्स आई और जे को मेमोराइज करने के लिए। मेमोराइजेशन तो आपको आता है, रिकॉर्ड में करके दिखा भी दूंगा, बट अब आपने ये देखा कितना ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग ट्री डायग्राम, जो भी ट्री डायग्राम मैंने बनाया आपको बनाकर दिखाया उसी से कोड तो डिराइव कर लिया हमने, है ना। ओके। और हाँ, ये वाला जो फंक्शन है इज ए पैलिंड्रोम, ये तो बड़ा आसान है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, वो मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा, एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलो अभी कोड करते हैं, उसका टाइम स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे, उसके बाद आएंगे अपने बॉटम अप्रोच पे। बॉटम अप्रोच पे कौन सा तरीका, डॉट लेंथ निकाल लेते हैं,
ठीक है, और रिटर्न सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे जहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे और बता देंगे कौन सा यहाँ पर अपने पूरा स्ट्रिंग आई आ सकता है। स्ट्रिंग एंड पहले तो ये चेक मार देते हैं कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाता है, ऑब्वियसली बात है ऐसा केस आ सकता है, तो उस केस में हमें ऑब्वियस बात है जीरो कट करने की जरूरत है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे का तो हुआ, या तो आई इक्वल टू जे मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर है, या फिर आई अगर ग्रेटर देन जे हो गया मतलब इनवैलिड है ना, इनवैलिड है और हमें कोई कट करने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा स्ट्रिंग आई से लेकर जे तक ये पैलिंड्रोम है।
अगर ऐसा है तो ओके। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कितने कट्स लगेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे फॉर लूप चला के। फॉर इंट k इज इक्वल टू, याद करो आई से स्टार्ट करेंगे, k इज लेस देन इक्वल टू j-1 तक ही कट मार सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था k प्लस प्लस, ठीक है। अब देखना इंट पहले तो टेम्प निकाल लेते हैं 1 एस आई से लेकर k, एक फंक्शन इंट j नॉट इक्वल, एग्जांपल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, देखा था हमने ट्रू कर देंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हो, आई से लेकर जे तक के सबस्ट्रिंग को ऐसे चेक करोगे, ठीक है। तो देखा था हमने सब कुछ कर दिया, इसके बाद मेमोराइज करके हम लोग देख लेंगे कि इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो एग्जांपल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट करोगे तो ये आपका मोस्ट वाली टीएलई तो यही देगा, ऑब्वियस बात है। लेट्स सी, यस टीएलई आ गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको मेमोराइज कर देते हैं। तो मेमोराइज करने के लिए देख लो यहाँ पर दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, आई और जे, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोराइज कर, तो हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, यहाँ पर मेमसेट टी -1 से कर दिया साइज ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट जब भी रिटर्न कुछ करें तो टी ऑफ आई को जे में असाइन कर देंगे। टी ऑफ आई को जे, और सब कुछ करने से पहले ही ऊपर चेक कर लेंगे कि कहीं आई से जे तक का मैंने स्टोर कर तो नहीं रखा है पास्ट में। इफ टी ऑफ आई को जे इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब स्टोर ये केसेस सबमिट करके देखते हैं। अभी भी अगर टीएलई आएगा तो डेफिनेटली हमें ऑप्टिमल अप्रोच यानी कि बॉटम अप की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी, ओके अभी भी देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है, और कितने टेस्ट केसेस पास हुए वो यहाँ से शायद पता चल जाता है। 32 टेस्ट केस पास हुए आउट ऑफ 37, मतलब हमें और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए होगा, राइट। ठीक है, इसमें आप एक और ऑप्टिमल काम ये कर सकते हो कि इस पैलिंड्रोम देख लो, बार बार आप स्ट्रिंग एस में आई से जे तक को चेक मारना पड़ रहा है आपको कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी आप स्टेट स्टोर कर सकते हो कि किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक का सब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है और पैलिंड्रोम नहीं। तो बार बार आपको इस तरह इटरेट नहीं करना पड़ेगा, ये वाइल लूप लगाना पड़ रहा है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से ही स्टोर करके रख लो कि किस इंडेक्स तक किस इंडेक्स तक का सब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या पैलिंड्रोम नहीं है। तो वहाँ पर भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है आपका। बट इसका अगर टाइम और स्पेस कंप्लीट मैं आपको बताऊँ तो अगर ध्यान दो, यहाँ पर आई टोटल कितने स्टेट्स होंगे यहाँ पर, देखो 2001 है, मतलब देखा जाए तो हमारे टी का साइज जो है n+1 और n+1 हमने लिया, राइट। तो और टोटल कितने स्टेट्स हो जाएंगे, O ऑफ n स्क्वायर स्टेट हो जाएंगे, O ऑफ n स्क्वायर इतने स्टेट तो आपको विजिट करना ही करना है। तो O ऑफ n स्क्वायर तो लग जाएगा, बट देख रहे हो हर बार आप जब भी कॉल कर रहे हो रिकर्शन को तो एक बार आप यहाँ पैलिंड्रोम भी कॉल कर रहे हो, तो इसकी वजह से O ऑफ n यहाँ लग रहा है, और ये देख रहे हो फॉर लूप भी तो चल रहा है, O ऑफ अप्रॉक्सीमेटली n ये भी लग रहा है। तो n स्क्वायर स्टेट से और हर बार आप जब भी कॉल कर रहे हो तो n+n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लग रहा है। n+n क्यों हुआ, एक बार ये पैलिंड्रोम, एक बार ये फॉर लूप, जिसको आप 2n भी लिख सकते हो या तो अप्रॉक्सीमेट करके n भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल कितना हो गया देखो, तो सॉरी इनटू होगा यहाँ पर n स्क्वायर इंटू n हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n क्यूब हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ n स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि आपने देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली n+1 साइज लिया है ये डीपी अरे का, ठीक है। तो O ऑफ n स्क्वायर आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। टाइम लिमिट एक्सीड ये भी दे दे रहा है, तो अब हमें चलना चाहिए अपने बॉटम अप्रोच की तरफ। तो देखो बॉटम अप वाले अप्रोच में ब्लूप्रिंट हम क्यों लगा रहे हैं, ब्लूप्रिंट वाला मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई पैलिंड्रोम डीपी प्रॉब्लम है और हम वही कर ही रहे थे, पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम आता है, तो हम ये ब्लूप्रिंट एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए, ठीक है। तो याद करो इस ब्लूप्रिंट वाला कोड जो मैंने आपको सिखाया था, इसकी मदद से हम सबसे पहले क्या बना लिया करते थे, हम सबसे पहले एक 2D अरे बना लिया करते थे, ठीक है। 2D अरे बना लिया था, ओके, और वही सेम कोड यूज करके 2D अरे बना लेंगे, 0 1 2 3 0 1 2 एंड सो ऑन जो भी है, ठीक है। और इस 2D अरे का मतलब क्या होता था कि अगर टी ऑफ आई जे, इस 2D अरे का नाम टी है मान लेते हैं, अगर ये ट्रू है, पता है इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि जो भी मेरा स्ट्रिंग है वो इंडेक्स नंबर आई से लेकर इंडेक्स नंबर जे तक का जो उसका सब स्ट्रिंग होगा वो पैलिंड्रोम होगा, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो। और अगर फॉल्स है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी करना आता है, और ब्लूप्रिंट वाले कोड को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देंगे तो मेरा ये वाला 2D अरे तैयार हो जाएगा, राइट, कि कहाँ पर ट्रू डालना है कहाँ पर फॉल्स डालना है। तो ये 2D अरे सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे अपने ब्लूप्रिंट वाले कोड से, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ब्लूप्रिंट वाला अरे मेरा बन चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास स्ट्रिंग की पूरी जानकारी है कि स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक वो पैलिंड्रोम है एंड कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए, और इससे हम इसकी मदद से हम बहुत इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये मैंने फिल कर लिया है, इस 2D अरे को फिल कर लिया है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से कैसे ये हमको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो देखो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा इसको समझने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, मान लेते हैं आई अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी मैं इतने स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, मतलब 0 से लेकर आई, ऐसे जो है 0 से लेकर आई तक के सब स्ट्रिंग को देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या 0 से लेकर आई अभी 0 पर खड़ा है, तो 0 से लेकर 0 तक की बात हो रही है, यानी कि इतने स्ट्रिंग की बात हुई है, सिर्फ इतने स्ट्रिंग की। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर आई तक का जितना भी सब स्ट्रिंग है,
ठीक है, उसमें हमें कितने कट करने पड़ेंगे? 0 कट करने पड़ेंगे क्योंकि ये खुद पूरा पैलिंड्रोम है, राइट, ये सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, 0 कट्स। ठीक है, 0 से लेकर आई की बात करें तो ठीक है, बढ़िया। तो इसके बाद मैं आई को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँगा। ठीक है, 0 से लेकर आई तक, इस बार देखो 0 से लेकर आई तक कौन सा स्ट्रिंग है, ए बी है ना। तो क्या हमें इसमें कट करने की जरूरत पड़ेगी? यस, क्यों? क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 से लेकर आई, लास्ट टाइम 0 था, अभी आई है 1, तो 0 से लेकर 1 तक के सब स्ट्रिंग में हमें कट करना पड़ेगा अगर मुझे पैलिंड्रोम में चाहिए तो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, मैं भी सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो 0 से लेकर 1 तक मुझे कितना कट करना पड़ेगा, तो वो तो हम देख लेंगे, हर जगह कट मार मार के ट्राई मार लेंगे। सबसे पहले मैं कट एक बार यहाँ ट्राई मारता हूँ, और वैसे कहाँ कट मार पाओगे, इधर तो मारोगे नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड में कुछ स्ट्रिंग बचेगा ही नहीं, यहाँ कट मार सकते हो, है ना। तो k इज इक्वल टू 0th इंडेक्स पर आप कट मार सकते हो। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 पर मार सकते हो, नहीं, मुझे तो राइट साइड में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा अगर आपने यहाँ कट मारा तो, है ना। अगर आपने यहाँ पर कट मारा है, सॉरी इधर अगर आपने कट मारा है तो वैसे राइट साइड में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इसका निकालना है ना। ठीक है, तो कहाँ कट मार सकते हो, k इज इक्वल टू 0 पर मार सकते हो। अब कब तक मार सकते हो, k इज इक्वल टू लेस देन आई तक, जितने भी इंडिसेस है वहाँ कट मार के आप ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 पर ट्राई मारते हैं। अगर आपने k इज इक्वल टू 0 पर ट्राई कट मारा, यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पर कट अगर आपने मारा अगर आपने यहाँ कट मारा 0 से लेकर आई तक, इस बार करने, यानी अब मान लेते हैं कि मैंने फिल कर लिया है, इस 2D अरे को फिल कर लिया है। अब देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे ये हमको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, अभी यहाँ ऐसे जो है 0 से लेकर आई तक के सब स्ट्रिंग को देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या 0 से लेकर आई अभी 0 पर खड़ी है, तो 0 से लेकर 0 तक की बात हो रही है, यानी कि इतने स्ट्रिंग की बात हो रही है, सिर्फ इतने स्ट्रिंग की। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर आई तक का जितना भी सब स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 0 कट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद पूरा पैलिंड्रोम है, राइट, ये सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, 0 कट्स। ठीक है, 0 से लेकर अगर आई की बात करें तो ठीक है, बढ़िया। तो इसके बाद मैं आई को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँगा। ठीक है, 0 से लेकर आई तक, इस बार देखो 0 से लेकर आई तक कौन सा स्ट्रिंग है, ए बी है ना। तो क्या हमें इसमें कट करने की जरूरत पड़ेगी? यस, क्यों? क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 से लेकर आई, लास्ट टाइम 0 था, अभी आई है 1, तो 0 से लेकर 1 तक के सब स्ट्रिंग में हमें कट करना पड़ेगा अगर मुझे पैलिंड्रोम में चाहिए तो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, मैं अभी सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो 0 से लेकर 1 तक मुझे कितना कट करना पड़ेगा, तो वो तो हम देख लेंगे, हर जगह कट मार के ट्राई मार लेंगे। सबसे पहले मैं कट एक बार यहाँ ट्राई मारता हूँ, और वैसे कहाँ कट मार पाओगे, इधर तो मारोगे नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड में कुछ स्ट्रिंग बचेगा ही नहीं, यहाँ कट मार सकते हो, है ना। तो k इज इक्वल टू 0th इंडेक्स पर आप कट मार सकते हो। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 पर मार सकते हो, नहीं, मुझे तो राइट साइड में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा अगर आपने यहाँ कट मारा तो, है ना। अगर आपने यहाँ पर कट मारा है, सॉरी इधर आपने कट मारा तो वैसे राइट हैंड को स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इसका निकालना है ना। ठीक है, तो कहाँ कट मार सकते हो, k इज इक्वल टू 0 पर मार सकते हो। अब कब तक मार सकते हो, k इज इक्वल टू लेस देन आई तक, जितने भी इंडिसेस है वहाँ कट मार के आप ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 पर ट्राई मारते हैं। अगर आपने k इज इक्वल टू 0 पर कट मारा, यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पर कट अगर आपने मारा, ठीक है, और मैं इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, 0 से लेकर आई तक की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, और आपने k इज इक्वल टू 0 पर एक कट मारा है, तो कट मारने पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ k इज इक्वल टू 0 के बाद के जो सब स्ट्रिंग है, मतलब इतना जो सब स्ट्रिंग है, यानी कि k प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सब स्ट्रिंग है, क्या वो पैलिंड्रोम है। और वो आप कैसे पता कर सकते हो, आराम से इस टेबल से पता कर सकते हो, डायरेक्टली इस टेबल से पूछ लेना कि t ऑफ k प्लस 1 से लेकर आई तक का सब स्ट्रिंग क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो मतलब वो पैलिंड्रोम होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 0 था ना, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और i मेरा 1 है ऑलरेडी, तो t ऑफ 1,1 ट्रू होगा पक्का, है ना। और यहाँ पर आप फिल करोगे तो वो t ऑफ 1,1 ट्रू ही होगा, तो मतलब वो पैलिंड्रोम है। और अगर वो पैलिंड्रोम है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस 1 से लेकर i तक का जो सब स्ट्रिंग है, मुझे वहाँ पर कोई स्प्लिट कट मारने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना पार्ट जो है ना, ये मेरा पैलिंड्रोम है। बस मुझे क्या टेंशन लेना है कि 0 से लेकर k तक का जो सब स्ट्रिंग है, मतलब इतना सब स्ट्रिंग यहाँ तक कि आपने कट यहाँ पर ना मारा है, तो 0 से लेकर यहाँ तक का सब स्ट्रिंग जहाँ तक आपने कट मारा है, वहाँ पर कितना स्टेप्स लगा था उसको पैलिंड्रोम में तोड़ने में। ठीक है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टोर तो किया था कि 0 से लेकर कि यहाँ k तक, k की वैल्यू 0 है, मतलब 0 से लेकर 0 तक में याद है कितना कट लगा था, 0 कट्स लगा था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे, एक अरे ले लेंगे, इसमें स्टोर, इसका नाम डीपी रख देते हैं। ठीक है, और इस डीपी को मैं डिफाइन कर देता हूँ 0 1 2 3। पता है डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होगा, मिनिमम कट्स कितने लगे टू स्प्लिट द स्ट्रिंग एस, जो कि 0 से लेकर आई तक था, इनटू पैलिंड्रोम्स। ठीक है, डीपी ऑफ आई का मतलब ये होगा मिनिमम कट्स टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग एस इनटू पैलिंड्रोम। तो आपको ऑब्वियस रिटर्न लास्ट में क्या करना पड़ेगा, डीपी ऑफ ये पूरा जो स्ट्रिंग होगा आपका, ये जो पूरा स्ट्रिंग है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर, इसका लेंथ 4 है मान लेते हैं, 0 से लेकर n-1 तक का स्ट्रिंग है ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स स्टोर है, ये देखो 0 से 0 तक का स्टोर कर रहा है, 0 से 1 तक का स्टोर कर रहा है, ये 0 से 2 तक का स्टेटस स्टोर कर रहा है कि कितने मिनिमम कट्स होंगे, ये 0 से 3 तक का स्टोर कर रहा है कितने मिनिमम कट्स होंगे। तो ऑब्वियस बात है आपको डीपी ऑफ 3 रिटर्न करना पड़ेगा, यानी दैट इज डीपी ऑफ n-1। डीपी ऑफ n-1 का मतलब क्या हुआ कि s 0 से लेकर n-1 तक का जो सब स्ट्रिंग होगा, मतलब इंटायर स्ट्रिंग की बात हो रही है, उसमें कितने मिनिमम कट्स लगेंगे, और वही आपका प्रॉब्लम भी पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स का आंसर स्टोर कर देंगे अभी। जैसे ये देखो, आपको ये पहले पता चल गया था ना कि याद करो 0 से 0 तक का जो सब स्ट्रिंग है उसमें कट्स कितने लगेंगे, 0 कट्स लगेंगे। तो देखो यहाँ पर डीपी ऑफ 0 मैंने 0 स्टोर कर दिया। अब इसी बात है 0 से 0 का मतलब क्या हुआ कि वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है सिर्फ a को, तो उसमें 0 कट्स लगेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। अब जब मैं i इक्वल टू 1 यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने ये तो देख लिया कि अगर मैं k इक्वल टू 0 पर कट करूँगा तो जो रिमेनिंग सब स्ट्रिंग है ये b, वो तो पैलिंड्रोम है, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, k प्लस 1 से लेकर i तक का ये तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, बट 0 से लेकर k तक का जो सब स्ट्रिंग होगा, मतलब इसके लेफ्ट वाला पार्ट, वहाँ पर कितने कट लगे होंगे मिनिमम, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा डीपी से, यानी कि डीपी ऑफ
के, है ना, डी पी ऑफ के का मतलब क्या हुआ, 0 से के में कितने कट लगे थे, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ दोबारा से कि अभी हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे हैं ए बी को, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 है, और आपको ये पता चल चुका है कि आपने कट यहाँ पर मारा था, यानी कि के 0 पर कट मारा था, और आपको ये भी पता चल गया है कि टी ऑफ के प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सब्सट्रिंग है, या तो आई यहाँ पर था ना, इंडेक्स नंबर 1 पर था, ये ट्रू है, मतलब ऑब्वियस बात है ये करेक्ट है तो ट्रू ही होगा, मतलब ये पहले सिंड्रोम है, ठीक है। और आपको लेफ्ट साइड का कहाँ से पता चलेगा कि कितने कट वहाँ पर लगे थे, डीपी ऑफ के, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, डीपी ऑफ के मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के इंडेक्स तक में कितने मिनिमम कट्स लगे थे पैलिंड्रोम में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का मुझे यहाँ से पता चल जाएगा डीपी ऑफ के, और एक कट मैंने यहाँ पर मारा है, ठीक है, तो 1 प्लस एक कट मैंने यहाँ मारा है, 1 प्लस मैंने इसीलिए किया 1, और लेफ्ट साइड में तोड़ने में कितना लगा था उनको पैलिंड्रोम में तोड़ने में, डीपी ऑफ के लगा था, राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि भाई, और देखो ऑब्वियस बात है, इतने पार्ट में तो कोई कट नहीं करना क्योंकि ये पार्ट तो पैलिंड्रोम है, राइट, है ना। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये आपको डीपी ऑफ आई निकाल कर दे देगा, है ना, मतलब डीपी ऑफ आई में आप इसको असाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो डीपी ऑफ आई मतलब 0 से लेकर आई तक के सबस्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में तोड़ने में कितना लगा कट, तो एक कट तो इसकी वजह से लगा, ठीक है। और इस कट के राइट हैंड साइड में जो भी सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम वो हमने देख लिया यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड का मैं आराम से निकाल सकता हूँ डीपी ऑफ के से, तो 1 प्लस डीपी ऑफ के, है ना। और ऑलरेडी डीपी ऑफ आई में अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो मैं देख लूँगा कि 1 प्लस डीपी ऑफ के उससे भी छोटा है क्या, तो मैं डीपी ऑफ आई में उसको असाइन कर दूँगा। मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये ना लिख के ऐसे लिख दूँगा कि मिन ऑफ डीपी ऑफ आई, 1 प्लस डीपी ऑफ के। Are you a tech professional? यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना तो आपको और हद से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देखना, इसलिए मैं इसको बेस्ट एग्जांपल बोल रहा था। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, और मान के चलते हैं हमने इसको फिल कर दिया है, डीपी ऑफ 1 में या तो कितना कट लगा था, अभी तो इंट मैक्स डाल देते हैं इसमें, इंट मैक्स डाल देते हैं, तो डीपी यहाँ पर क्या आया था, डीपी ऑफ आई, तो डीपी ऑफ आई में ऑलरेडी इंट मैक्स डाला हुआ है, प्लस 1 प्लस डीपी ऑफ के की वैल्यू 0 थी ना, ठीक है, तो डीपी ऑफ 0 कितना है मेरा, डीपी ऑफ 0 0 है, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1 आ गया, तो डीपी ऑफ आई मतलब आई अभी 1 पर था ना, आई यहाँ पर था, तो डीपी ऑफ आई में मैं डाल दिया 1 डाल दिया, ठीक है, अभी जस्ट 1 निकाला मैंने, ये रहा यहाँ से, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, ये देखो, वैसे देखो मैं आपको प्रूफ ये दिखा भी देता हूँ विजुअली, डीपी ऑफ आई 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक, 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक का जो भी सबस्ट्रिंग है, यानी कि ये वाला सबस्ट्रिंग, इसको पैलिंड्रोम में तोड़ने में सिर्फ एक कट लगेगा, ऑब्वियस बात है, इसको एक कट मारो, यहाँ पर ए आ जाएगा और राइट साइड में बी आ जाएगा, तो दोनों पैलिंड्रोम है, सही बात है, ठीक है, ओके। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, आई मेरा आगे बढ़ेगा, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर से मैं वही सवाल करूँगा कि क्या आप सबसे तो ये देखूंगा कि 0 से लेकर आई तक, तो आई इक्वल टू 2 है ना, 0 से लेकर 2 तक क्या पैलिंड्रोम है, नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है ना, पैलिंड्रोम नहीं है, तो मुझे कट मारना पड़ेगा, तो कट मैं कहाँ मार सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ ट्राई मारूंगा, के इक्वल टू 0 पर अगर मैं कट मारता हूँ तो मैं यहाँ पर कट तभी मारूंगा जब मुझे पता होगा कि के प्लस 1 से लेकर आई तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। तो मैं फिर से चेक करूँगा क्या के प्लस 1 से आई तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं है, देखो ये पार्ट पैलिंड्रोम नहीं है, इसकी वाली पक्का फॉल्स रही होगी हमारे टी वाले टेबल पे, है ना, यहाँ पर फॉल्स रही होगी, इसका मतलब यहाँ पर मैं कट नहीं मार सकता, ठीक है, देखो ये पार्ट पैलिंड्रोम नहीं है, इसकी वाली पक्का फॉल्स रही होगी हमारे टी वाले टेबल पे, है ना, यहाँ पर फॉल्स रही होगी, इसका मतलब यहाँ पर मैं कट नहीं मार सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कट यहाँ मारूंगा, के इक्वल टू 1 पे मैंने कट मारा, ठीक है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा के इक्वल टू 1 पर मैंने कट मारा, तो 1 के इक्वल टू सॉरी के प्लस 1 से लेकर आई तक का सबस्ट्रिंग, मतलब ये क्या पैलिंड्रोम है, यस, ऑब्वियस बात है पैलिंड्रोम है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो और मैं एक और चीज़ क्या चेक करूँगा, तो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया, सबसे पहले ये चेक किया कि क्या इफ़ टी ऑफ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, इफ़ टी ऑफ के प्लस 1 से लेकर आई तक, तो के प्लस मतलब 2 हो गया, 2 से लेकर 2 तक क्या पैलिंड्रोम है, यस, इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। एंड ये चेक करेंगे कि भाई चलो ये तो पैलिंड्रोम है, हमने यहाँ पर एक कट मार दिया तो 1 हो गया, प्लस 0 से लेकर के तक का जो सबस्ट्रिंग है, ये रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो सबस्ट्रिंग है, इसमें कितना मिनिमम कट लगा था, ठीक है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो के इक्वल टू 1 पर आपने कट मारा था ना, तो डीपी ऑफ के जब कर दोगे तो इससे आपको पता क्या पता चलेगा कि 0 से लेकर के तक यानी कि 1 तक का जो सबस्ट्रिंग है वहाँ पर कितने कट लगे थे, ठीक है। तो इतने में कितने कट लगे आपको पैलिंड्रोम में तोड़ने में, और यहाँ पर एक कट आपने मारा, ठीक है, तो कितना हो गया 1 प्लस डीपी ऑफ के, ठीक है। अगर ये लेस देन हुआ, अगर ये लेस देन हुआ ऑलरेडी डीपी ऑफ आई की जो भी वैल्यू है उससे, तो ऑब्वियसली मैं डीपी ऑफ आई को अपडेट कर दूंगा, डीपी ऑफ आई विल इक्वल टू 1 प्लस डीपी ऑफ के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ मैं चेक करना था कि सबसे पहले जहाँ पर मैं कट मार रहा हूँ मैं ये देखूंगा कि वहाँ से लेकर आई तक में जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, ये सी पैलिंड्रोम है, और लेफ्ट साइड में जो सबस्ट्रिंग है, ठीक है, वहाँ पर जितना कट हुआ डीपी ऑफ आई में क्या आ जाएगा 1 प्लस डीपी ऑफ के की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो डीपी ऑफ आई भी 2 पर खड़ा हुआ ना, तो डीपी ऑफ 2 अपडेट होगा, यहाँ पर 2 आ गया, इन्फिनिटी था पहले, अभी 2 आ गया, ठीक है। और अभी वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या सच में इंडेक्स आई तक का जो सबस्ट्रिंग है उसको पैलिंड्रोम्स में तोड़ने में सही में 2 कट लगेंगे, देख लेते हैं। हाँ, एक कट यहाँ मारना पड़ेगा, एक कट यहाँ मारना पड़ेगा, कट्स, है ना। डीपी ऑफ 2 का क्या हुआ, 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक का जो सबस्ट्रिंग वहाँ कितने कट लगेंगे, 0 से लेकर 2 तक का सबस्ट्रिंग, यहाँ तक क्लियर है। अब देखना ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था। अब देखना आई यहाँ पर आया, ठीक है, आई यहाँ पर आया, अब मैं फिर से वही चेक करूँगा कि सबसे पहले ये देख लूँ कि क्या 0 से लेकर आई तक का पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, इसमें हमें कट मारना पड़ेगा, तो मैं कट मारने की ट्राई मारता हूँ। सबसे पहले मैं के इक्वल टू 0 पर कट मारता हूँ, ठीक है, के इक्वल टू 0 पर कट मारा तो सबसे पहले ये चेक करूँगा कि इंडेक्स नंबर के इक्वल टू 0 पर कट मारा तो के प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है क्या वो पैलिंड्रोम है, कैसे देखेंगे, के प्लस 1 से लेकर आई तक, यानी कि ये वाला देख लो टी से मुझे मिलेगा, टी के प्लस 1 से लेकर आई तक, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इतना पार्ट जो है वो पैलिंड्रोम है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसमें कोई स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे टेंशन बस इतने पार्ट का लेना है ना, इतने पार्ट में कितना लगा होगा, मतलब इंडेक्स नंबर 0 तक, यानी कि जहाँ आपने कट मारा के इक्वल टू 0 तक, तो वो कैसे देखेंगे, एक कट आपने यहाँ पर मारा और के इक्वल टू 0 तक में जो भी सबस्ट्रिंग है उसमें कितना स्प्लिट कट लगा वो आप यहाँ से निकाल लोगे, 1 प्लस डीपी ऑफ के, ये 1 प्लस क्यों किया, इस कट की वजह से किया, तो 1 कट एक ये लगा
प्लस इस के इक्वल टू 0 तक इंडेक्स 0 तक कितने कट लगे डीपी ऑफ के। ठीक है, अगर ये लेस देन है ऑलरेडी डीपी ऑफ आई से, तो डीपी ऑफ आई में हम क्या साइन कर देंगे 1 प्लस डीपी ऑफ के, जो कि हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 प्लस डीपी ऑफ के, डीपी ऑफ 0, डीपी ऑफ 0 कितना है 0 है, तो 1 प्लस डीपी ऑफ 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टी और डीपी ऑफ आई में, मतलब आई क्या है इंडेक्स नंबर 3 है ना, तो इंडेक्स नंबर 3 पे हमने यहाँ पर असाइन कर दिया 0, सॉरी 0 नहीं 1 आया था, 1 प्लस डीपी ऑफ के 1 आया था। ठीक है, और सही बात भी है, देखो डीपी ऑफ 3 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा, इसमें सिर्फ एक कट मारना पड़ेगा और पैलिंड्रोम में टूट जाएगा पूरा स्ट्रिंग। सही बात है, देखो, और वो कट यहाँ पर मारना पड़ेगा इंडेक्स नंबर 0 पर। अगर आपने यहाँ पर कट मारा तो देखो ये वाला पार्ट सबस्ट्रिंग है और पैलिंड्रोम है, और ये वाला सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है। ओके, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल करी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसके बाद के इज इक्वल टू 0 पर आपने कट मारा था, आप के इज इक्वल टू 1 पे कट मार के देख लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो उससे पहले तो ये चेक करेंगे कि के प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। के इज इक्वल टू 2 पर से अगर मारेंगे तो देख लेते हैं के प्लस 1 यानी कि यहाँ से लेकर आई तक का सबस्ट्रिंग, यानी कि ये भी एक पैलिंड्रोम होगा। यस, ये पैलिंड्रोम है, ऑब्वियसली बात है पैलिंड्रोम है। ठीक है, एंड 1 प्लस डीपी ऑफ के, यानी कि 1 प्लस इसकी वजह से, और डीपी ऑफ के मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सबस्ट्रिंग है इसमें कितने कट लगे, डीपी ऑफ के की वैल्यू 2 है, इंडेक्स नंबर 2 तक में जो सबस्ट्रिंग है कितने कट लगे यहाँ से निकालेंगे, डीपी ऑफ 2 है, 1 प्लस 2, क्या ये लेस देन डीपी ऑफ आई है? भाई डीपी ऑफ आई में तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो 3 इज नॉट लेस देन 1, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मस्त बढ़िया वाली यहाँ पर 1 ऑलरेडी सेटल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा इसको। उसके बाद के आगे तो जाएगा नहीं, के लेस देन आई तक ही यहाँ तक ही काट कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई हमारा आगे बढ़ेगा, तो ऑटो बाउंड हो गया, हमारा कहानी यहीं पर खत्म हो गया। फिर जैसे ही हमारा कहानी खत्म हुआ तो डीपी ऑफ आई हमारा फिल हो चुका होगा, और डीपी ऑफ आई में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी स्टोर किया है हमने। क्या स्टोर किया है कि हर इंडेक्स में जो वैल्यू है, मान लेते हैं डीपी ऑफ 2 जो है, ये पता है वो क्या बता रहा है कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इतना पार्ट जो ए बी सी है, इसमें कितने कट मारने पड़ेंगे कि सारे कट्स, यानी कि सारे सबस्ट्रिंग जो कट कर निकलेंगे वो पैलिंड्रोम हो। डीपी ऑफ 2 के लिए 2 है ना, तो ऑब्वियस बात है मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्या 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे स्ट्रिंग में मिनिमम कट पता कितना मारना पड़ेगा, सिर्फ एक कट मारना पड़ेगा बस यहाँ पर। इस कट को मारने से हुआ क्या, ये पैलिंड्रोम में निकल कर आ गया, ये पैलिंड्रोम निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब भी मुझे किसी का आंसर निकालना होता है तो मैं प्रीवियस सब प्रॉब्लम से आंसर निकाल रहा हूँ। ये देखो, जब आई मेरा यहाँ था, ठीक है, मुझे डीपी ऑफ आई निकालना है, तो देखो मैं प्रीवियस प्रॉब्लम से आंसर निकाल रहा हूँ, डीपी ऑफ के से निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक बार के कट यहाँ मारा तो डीपी ऑफ 0, जब अगर मैंने के कट यहाँ मारा तो डीपी ऑफ 1 हुआ वो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर डीपी है, राइट, कि मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए आप छोटे छोटे सब प्रॉब्लम की मदद से इसका आंसर निकाल रहे हो, डीपी ऑफ आई का आंसर निकाल रहे हो, यहाँ पर वही तो कर रहे हो। तो क्या है, प्योर डीपी का ही नेचर है। डीपी में हम लोग यही तो करते हैं कि किसी भी एन का प्रॉब्लम निकालने के लिए उसके छोटे छोटे सब प्रॉब्लम n-1 n-2 उनसे निकालते हैं उसका आंसर। एआई ट्रेडिंग शिकणं तो अब देखो नॉर्मल सा हम अपनी स्टोरी को बना रहे हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले यार हमने क्या बोला था, बॉटम अप हमने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले ब्लूप्रिंट यूज करके एक वो वाला वेक्टर 2D बना लेते हैं ना, ये वाला 2D बना लेंगे ब्लूप्रिंट का कोड यूज करके, सेम कोड चिपका देंगे। ठीक है, जहां पर टी ऑफ आई कॉमा जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर टी ऑफ आई कॉमा जे अगर ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एस इंडेक्स से लेकर आई जे तक का जो सबस्ट्रिंग है इज पैलिंड्रोम, और अगर ट्रू नहीं हुआ और वो फॉल्स हुआ तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि एस का जो सबस्ट्रिंग आई से लेकर जे तक का इज नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर है? पहला स्टेप तो ये है। जैसे ही मेरा ये टेबल फॉर्म हो गया उसके बाद तो बड़ा सिंपल था, याद करो मैंने ये वाला आपको सिखाया था कि आई हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे, इंडेक्स आई यहाँ पर रखा, और कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स आई यहाँ पर रखा, फिर कट करने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे कि इतने स्ट्रिंग को कट करने में कितने मिनिमम कट लगेंगे। फिर उसके बाद आई यहाँ पर लाया, फिर इस स्ट्रिंग का हमने आंसर निकाला, फिर आई यहाँ पर लाया पॉसिबल कट्स एट डिफरेंट इंडिसेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि
डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होता था? डीपी ऑफ आई का मतलब क्या हुआ कि एस स्ट्रिंग जो है उसका 0 से लेकर आई तक का जो सब स्ट्रिंग है ना, उसमें हाउ मेनी कट्स करेगा 0 से लेकर n लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? We are looking for इतना ही पता करना है कि वो रोम और नॉट। यहाँ तक क्लियर? इसको फिल करना बड़ा आसान होता था। याद करो, इंट आई इज इक्वल टू 0 रोम, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो टू एल इज लेस देन इक्वल टू एन एल प्लस प्लस मैक्सिमम लेंथ एन तक जाएगा, ठीक है? फॉर इंट, देखो वही ब्लूप्रिंट वाला कोड लिख रहा हूँ, मतलब सेम कोड चिपका रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन माइनस एल प्लस 1, तो ये तो मेरा रटा गया आई प्लस प्लस। इसलिए प्रीवियस वीडियो में देखना जहाँ पर मैंने इस ब्लूप्रिंट और भी वीडियोस बनाए हैं। जे इज इक्वल टू आई प्लस एल माइनस 1, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते थे कि अगर लेंथ इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो बस टी ऑफ आई कोमा जे Okay, so we have a palindrome, Boolean palindrome. Now, how does this palindrome? Basically, we are creating all the possibilities here for mm, what is mm, this is the suffix. This we start from behind. We have this J, but we move forward. Okay. Wait a sec.
Okay, j is from I till n, and this comes back. Keeps coming back, and j is from that character to n. So we are checking whether or not this is a palindrome, this is a palindrome, this is a palindrome or not. Or rather, we are standing here. If this is a palindrome, this is a palindrome, this is a palindrome, this or this. Okay. But we have already done the repeated work. So what have they done? J minus I is less than equal to 2. Even if it is 2, yeah, okay, because they're same, then we can definitely say it is true. Okay. We only need to find out the palindrome for 2 characters, and the rest, basically what we are doing is I plus 1. Pal of I equals to pal of I plus 1 and j minus 1. Yeah. The next character, next index. Okay. What we are doing is we know this is a palindrome. Now we need to figure out whether this is a palindrome or not. So we do I plus 1 and j minus 1 and check if this is a palindrome or not. This makes sense. For int I equal to 1 minus 1 I greater than or equal to 0. Then for int j equal to I, j less than n, j plus plus, if s dot char at I is equal to s dot char at j, then just check if this is less than equal to 2. If this is true, then set palindrome of I comma j to true, else palindrome of I comma j equal to I plus 1 j minus 1. Now this is a minimum cut. Okay. Worst case, cut each character. So we start with the worst case. Oh, I have already taken this. Here the base case is a bit different. If I equal to 0, I less than n, I plus plus, Kp of I equal to I, then compute the cuts. Okay. This, and for int j equal to, it starts from I, j is less than n, j plus plus. No.
let's see this. ये ट्रू तब होगा जब s of I इज इक्वल टू s of j होगा, राइट? मतलब दो ही ये मतलब इसका क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ साइज 2 ओनली है ना, तो ऑब्वियसली उसमें दो ही कैरेक्टर्स होंगे, या तो AC हो गया या तो फिर AB हो गया, जो भी है, तो बस हमें दो ही कैरेक्टर चेक करना है, या 4 है या 5 है, तो उस केस में कैसे पढ़ते हैं, T of I, We know. T of I plus 1, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लूप्रिंट वाला कोड है ना, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, एक 3 नाम का वेक्टर बना लिया, 2D वेक्टर, जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देगा Ti j ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला कि अब बस हमारा आधा काम हो चुका है, अब मैं एक वेक्टर ऑफ इंट dp बनाऊंगा जिसका साइज n रखूंगा, ठीक है, और ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा, dp ऑफ I इज इक्वल टू मिन कट्स रिक्वायर्ड टू कट स्ट्रिंग s, टू कट स्ट्रिंग s फ्रॉम 0 टू I तक का जो सबस्ट्रिंग होगा इज लेस देन n I प्लस प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना, इफ t ऑफ 0 से लेकर t ऑफ I तक का जो स्ट्रिंग है, अगर वो पैलिंड्रोम निकला, इज इक्वल टू ट्रू निकला, इसका मतलब समझे, मतलब स्ट्रिंग जो है 0 से लेकर I तक का जो सबस्ट्रिंग है इज अ पैलिंड्रोम, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, 0 से I तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो Yeah, remove this. कोई कट करने की जरूरत नहीं है। Yeah. If this is a palindrome from 0 to I, do you start from oh, this is dp. This okay, this is okay. My guy. यानी कि dp ऑफ I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो कट्स रिक्वायर्ड। Yeah, dp of I equal to 0. ठीक है, नो कट्स रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि 0 से लेकर I तक का जो सबस्ट्रिंग है उसमें कितना मिनिमम कट होगा वो dp ऑफ I में स्टोर करेंगे, और सिंस वो पैलिंड्रोम है तो dp ऑफ I मैंने 0 स्टोर कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था, हर जगह कट मार मार के ट्राई मारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो dp ऑफ I में मैं int अंडरस्कोर मैक्स डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज या तो कहाँ तक कट मार सकते हैं, k लेस देन I तक कट मार सकते हैं, ठीक है, k प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो क्या चेक करते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, t ऑफ k प्लस 1 से लेकर I तक का सबस्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम है तभी मैं वहाँ पर कट मारूंगा, ठीक है। पैलिंड्रोम होना चाहिए प्लस एंड 1 प्लस dp ऑफ k, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब जहाँ पर हमने कट मारा है उसके लेफ्ट साइड में सबस्ट्रिंग है, यानी कि dp ऑफ k में कितना कट लगा, 1 प्लस, अगर वो dp ऑफ I से छोटा हुआ तो ऑब्वियसली बात है dp ऑफ I को मैं अपडेट कर दूंगा 1 प्लस dp ऑफ k। यहाँ तक क्लियर है? और ये dp ऑफ k जैसी बजाय मैं रिटर्न करूंगा dp ऑफ n-1, मतलब स्ट्रिंग 0 से लेकर n-1, मतलब एंटायर स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इट इनटू पैलिंड्रोम्स ओनली। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दिस केसेस। इंडिया सबमिट करके देखते हैं। If or else if palindrome of k plus 1 k can go I up to 1 plus plus from k plus 1 to I 1 not up to plus 1 up to I. If this is true, and dp of k 1 plus k is
less than dp of I. Then we update dp of I with 1 plus dp of k. At the end, of course, return dp of n minus 1. So dp of I will give integer out one. कैरेक्टर पे जाएंगे, इंडेक्स आई यहाँ पर रखा और कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स आई यहाँ पर रखा, फिर कट करने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे कि इतने स्ट्रिंग को कट करने में कितने मिनिमम कट लगेंगे। फिर उसके बाद आई यहाँ पर लाया, फिर इस सब स्ट्रिंग का हमने आंसर निकाला, फिर आई यहाँ पर This is a palindrome. लाया और फिर इसी की मदद से Okay, I understand this now. Fine. Hmm. Cool. Hmm. 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 Hmm, hmm. Git add, git commit, git commit. Push. Palindrome partition. I do want to solve this problem. Given the head of assembly, linked list return true if it is a palindrome or false. Otherwise,
Hmm. Okay. What I can think of is to create a stack. Yeah, I can do it in off-n space. Could you do it in off-n time but of one space? I can do it using a bit mask, right? Because the numbers can be from 0 to 9. So I traverse through the linked list, invert the value at that index if only a single int value, only a single number is turned on, or zero number of, or if none of them are turned on, then only we can say that it is a palindrome. Yeah. So we create a mask. Then for int I equal to 0, I less than, I don't know the size, right? So while temp node temp equal to head. While temp is not equal to null, we do that, we move ahead. So int current value is equal to temp dot val. Now temp equal to temp dot next. That's how we move ahead. But before that, we perform operation. What is that? We mask. We need to invert the value of mask, right? So if it is even, set it to odd. If it is odd, I mean not even odd. If it is 1, set it to 0. If it's 0, set it to 1. How can we do that? Using a XOR operation. Initially at 0, XOR it with 1. It will be set to 1. Now again XOR it with 1 when we have 1, and it will be set to 0. So mask XOR, but this one will be left shifted by this many amount of times, per amount of times. So at the end, return integer dot bit count of mask less than equal to 1. Return this. Is it bit count if this function, or I don't remember quite, but let's see. Oh, list node. And yeah, it got accepted. So it is bit count, okay. Let's just double check.
This bit count return 0 returns true. Okay. 1, 2. Oh, wait. This is not a balance. Oh. So how can I do it in offense base but of one offense time but of one space? Stack. Okay. Okay. Use slow and fast pointers. Slow. Okay. This will be fast. While fast is not equal to null. What we do is we have a stack. This is the integer s equal to new stack. Okay. So just insert s dot push this value, and then this will be slow dot next. This will be fast equal to fast dot next. Why? Because this will move twice the speed of slow. Basically, this means that when fast reaches the end, slow will be exactly at the center, right? So now, while slow is not equal to null, uh, um, if s dot top or s dot peak is equal to int curve equal to s slow dot val. This equal to current value, then s dot pop. If this is not true, immediately return false. Otherwise, return true. That's it, right? It looks like this should work. Will this the things? Why? Okay, fast and fast dot next is not equal to null. Yeah, I kind of no, knew this, but yeah. And fast dot next is not equal to null. Okay. If fast is not equal to null, okay. If fast is not equal to null,
then slow equal to slow dot next. But okay, this is fine. Actually, okay. I thought I had to insert that value. No, we don't need to, right? Because we push in and then remove again. Yeah. Yeah. Okay, right. Git push. Okay, I will be back soon. My mom is calling. Fade to black. अरे हाँ क्या वीडियो कॉल किया? वीडियो रिकॉर्ड कौन करेगा? हम तीनों में से कौन वीडियो रिकॉर्ड करेगा? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बट मेरा नेट जाता था हमेशा। छोटा पार्ट चाहिए तो कर सकता हूँ वरना वो वीडियो का कंटिन्यूएशन काट देगा वो। तुम लोग को मेरा नेट तो पता है। वो है ऐसा डिवाइड करना तो कर सकते हैं वैसे। या तो फिर क्या करना है, या मैं रिकॉर्ड करूँ या मैं बोलूँ, पता नहीं। जो कॉन्फिडेंट है वो करो भाई। नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे तू बोल सकता है। मेरा तूने देखा है उसमें हालत तो क्या तेरा हुआ था? अच्छा था सबसे, हम तीनों में से सबसे बेस्ट तेरा था। हेलो, पता नहीं एक काम करना तेरे को कुछ बोलना नहीं है ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए। क्या क्या। ट्रांसक्रिप्ट लगे तो अपने को वीडियो ऑन करके वो बोलना है क्या, प्रेजेंट करना है? वो भी नहीं करना, वीडियो ऑन नहीं करना। मैं वही पूछ रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम। कुछ बोला तो नहीं है वैसे कि क्या करना है, क्योंकि एसआईएच के टाइम पे कैसा वीडियो ऑन नहीं करने को बोलते हैं ना वो लोग, सिर्फ बोलने को बोलते हैं स्क्रिप्ट। हाँ तो ट्रांसक्रिप्ट तो रख ही सकता है, उसमें से पढ़ ले खाली। हाँ तो फिर वीडियो ऑन नहीं करता है कोई, तो फिर क्या करना है, कौन बोलेगा? चाहिए तो तीनों थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं और वो एक वही ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करके रखते हैं उसमें। हाँ बस ये आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ वो तो ऑफ करूंगा रेडियो में। तेरा नहीं मेरा यहाँ से आया ना ट्रेन का। अच्छा सुनाई नहीं वो दिया तो तुमको? ठीक है, लोग समझते हैं। हाँ वो भी है, ठीक है मैं प्रॉब्लम नहीं फिर। बट ठक्कर बोल रहा था कोई एक ही करो। अरे फर्क नहीं पड़ता मैं है। भी सोच रहा था एक ही करने के लिए, क्योंकि फिर हम लोग स्विच करेंगे, एक ने मैस अप किया तो फिर सबको वापस करना होगा। कट लगा देंगे उसमें क्या है। अरे अरे तो क्या क्या कटिंग की थी ना। एक काम करते हैं, स्पिन द व्हील करते हैं, जिसका लगा वो लगा। मेरा ही लगने वाला है फिर पक्का। उस नहीं क्या कर सकते। करो स्पिन द व्हील करो फिर। मेरा ही लगने वाला है ना। पहले भी करो, सब पहले तैयार करते देन ये सब करते हैं। ठीक है फ्लो चलेगा। का ही भाग है ना, फ्लो तू करने वाला था ना, टेक्निकल अप्रोच मैं करने वाला था ना, उसको कनेक्ट कैसे करना था। देख का मैंने एक जो भेजा है ना उसके अकॉर्डिंग उसको बोल कि टेक स्टैक किधर किधर कनेक्ट होगा, एंड देन उसको बोल कि ये मेरे इमेजेस हैं, समझ रहा है? तू वापस बोल सकता है, मेरा गया था नेट। एक सेकंड ना, एक सेकंड। तू बोल रहा था मेरे टॉप के हिसाब से डाल। एक सेकंड ना। हाँ मैं बोल रहा था कि तू
अपने टेक्स्ट स्टैक में जो हम लोग ने पीपीटी में डाले ना, वो उसका स्क्रीनशॉट ले पूरा स्लाइड का, ठीक है, एंड वो डाल एंड उसको बोल कि मेरे को अभी टेक्स्ट स्टैक को फ्लो में मतलब मेरे को आई हैव टू शो दिस प्रोजेक्ट इन द लाइक यूजिंग द टेक्स्ट स्टैक। तो टेक्स्ट स्टैक में कैसे किधर कनेक्ट होता है, क्या क्या देखो, एरोस पे क्या नाम डालना है वो। ठीक है। तो मैं भी यही करता हूँ हर्ष के साथ, क्योंकि फ्लो एक ही बंदा बना सकता है ना। और तू एक काम कर, मैं देख, मैं टेक्स्ट स्टैक का फ्लो हर्ष बना रहा है, ओके। मैं पूरे उसका फ्लो बना रहा हूँ, मतलब आर्किटेक्चर का फ्लो बना रहा हूँ, हम्म। ठीक है। तो तू एक काम कर, तू मेरा पीडीएफ है उसको डाल, एंड जिन हम लोग के जो स्लाइड्स में पॉइंट्स है ना, उसको रिफाइन, मतलब रिफाइन कर मेरे पीडीएफ के अकॉर्डिंग। ओके ओके। भगत तूने तो रीसेंड करना तेरा पीडीएफ। हाँ क्या क्या तेरा अपडेटेड पीडीएफ रीसेंड करना। एरोथॉन हाँ 1 ही हाँ, है, बट ठीक है, भेज दे वापस। वो ठीक है। एक और बात है कि फिर ठक्कर ने जो भेजा था उसका क्या करना है? वो रिपोर्ट है, वो भी डालना है, सबमिट करना है। अपने को 3 चीज सबमिट करना है: वीडियो, पीपीटी, रिपोर्ट। सबका ना रिकॉर्ड भेजा है। अच्छा ठीक है, ओके। और वो थोड़ा उसका फॉन्ट का इश्यू है। वो तो कर लेंगे, वो कर सब रहा है। करते हैं पहले। हाँ। पहले पीपीटी खत्म करते हैं। ये गाना लगा ना, तो ये मेरी शब है। मैं गाना नहीं, वो रेडियो बज रहा है। अरे हाँ, वो भी है, तेरा रेडियो है। हाँ, उसमें स्पॉटिफाई कनेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। व्हाट? हाँ, अरे उसका सारे गामा वाला होगा। अच्छा। नहीं ये सारे गामा का नहीं है, बट हाँ इस पे तू एफएम कर सकता है, एएम कर सकता है, तू ऑडियो जैक भी लगा सकता है इस पे, और ब्लूटूथ भी कर सकता है। हाँ एएम तो क्या वही। होता है? क्या क्या? एएम क्या होता है? एएम 320 हर्ट्स, वो सब में हर्ट्स का रेंज बढ़ जाता है। अच्छा। वो आई गेस इंडिया में इतना यूज नहीं होता है, एफएम ही यूज होता है। क्योंकि मैंने वही सुना है, बट कभी यूज हाँ, नहीं किया है। मेरे हाँ इसमें भी इंडिया है। में एफएम ही चलता है। हाँ भाई। एफएम है मेरे इसमें भी। हम्म, लगाओ, मैं लगा तो सकता हूँ, मेरे को कुछ इशू नहीं है। रुक जा, मैं चैनल चेंज करता हूँ, कोई अच्छा गाना बजेगा तो वो लगा। पूरा। बाप रे। कितना याद करता है तो उसको, हाँ हर्ष? मैं क्या म्यूट पे चले गया क्या? हेलो। क्या होगा उसका? अच्छा। हाँ। कुछ बोला? नहीं, मैं वही बोल रहा बोला था, आपने। कितना याद करता है तो उसको, थोराट को। बस घटा, सॉरी। क्या सॉरी। बात है, बस बोल। क्या बात है। हाँ। तू दैट। हेलो, अभी आ रहा है? यस। अच्छा तो आने का है। यस, तेरा आवाज आ रहा है अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तेरा भी आवाज आ रहा है अभी। अभी तेरी कट रही है। वर्ड। हाँ अभी वापस ऑन कर लो।
हेलो। हेलो हेलो। हाँ आ रहा है मेरा आवाज? थोड़ा कट रहा है बट आ रहा है। ओके। मैं म्यूट Words तो अनम्यूट बढ़िया कर लग रहा रहे हूँ। मैं म्यूट अनम्यूट कर रहा था। मेरे को लगा मेरा कट रहा है इतना टाइम से। तेरा तो कट ही रहा है। हाँ तेरा कटे रहा और मैं अभी म्यूट अनम्यूट करके वो ये कर रहा था ट्राई कि मेरा कट रहा है करके। नहीं अभी तेरा ठीक हो गया। पता है पता है। मैं म्यूट अनम्यूट कर रहा था जब अभी बोल रहा गया। था तभी। अच्छा हाँ। ये गया ऑफिस। यस। हर्ष तू बोल रहा है कुछ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ बोल रहा हूँ। तू कुछ बोल नहीं नहीं रहा भाई। था ना। हाँ वो हाँ गया ऑफिस। अरे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। जाएगा ही ना अच्छा भाई। अच्छा। बाप रे। उठा उठा।
हाँ, जो कहते थे फिर। नहीं नहीं नहीं।
दिल बहलाने का एक और बहाना 20 मिनट गाने पे गाना only on 104.8 Kish FM. जाने के टाइम है मालूम है वही गाना मेरा बन गया मस्त बना हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें मन में हो तुम ही
दिल बहलाने का एक और बहाना 20 मिनट गाने पे गाना only on 104.8 इश्क FM. इश्क non-stop. 20 मिनट का प्यार म्यूजिक लगातार only on 104.8 इश्क FM. इश्क waving. API gateway. मैं 2 भेज रहा हूँ, कौन सा वाला पसंद आया बताओ। जी
भेजा है। और एक अच्छा वाला ऐसा है, ये कॉपी नहीं होता, व्हाट्सएप पे नहीं जाता ये। ठीक है, एक मैंने इसमें डाला है, टेक्निकल अप्रोच में देख, ऐसा दिखेगा वो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मेरे भाई किसमें कुछ दिख ही नहीं रहा ना, क्या लिखा है टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ग्रुप पे डाला है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रहा था। नहीं ये ठीक है, और बट वो टेक्स्ट तो दिखना चाहिए ना। टेक्स्ट इसमें देखना, व्हाट्सएप पे भेजा, वो बड़ा कर लेंगे। पीपीके में वो ये कैसे देखेंगे, जो भी जज रहेगा वो। इसको अलग स्लाइड में डालना पड़ेगा। हाँ, या फिर ये जो आइकन्स है ना, इसको छोटा करके एक कॉर्नर में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं को ना। भी प्रॉपर करना पड़ेगा, एरो थोड़े वैसे है। ये तूने क्या बनाया? ये तो मैं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ मतलब, ये टेक्स्ट का बनाने वाला था ना, इसमें टेक्स्ट टैग वाला डिटेल बनाना। क्या क्या? मेरे को बट वो मैंने बनाया तो था स्टार्टिंग में, बट वो बहुत इनकम्प्लीट लग रहा था मेरे को, तो मैं मेरे को भेजता हूँ। तो फिर मैं भी यही बना रहा, तू भी यही बना रहा है। मैंने वो ड्रॉ डॉट टाइप में बनाया था, फिर कनेक्शन बाकी, बट देख लो इतना ही रहेगा फिर वो। देख ये वाला, देखा जो रिसेंट भेजा है। हाँ बट ये भी वही हुआ ना, तू टेक का बना रहा था ना, टेक मतलब जो तेरे पास जो टेक का इमेजेस है उसका फ्लो बताना तेरे को, समझ रहा है? मतलब मैं वो इमेज को ब्लॉक्स का पहले इमेज डालूं और उससे बनाऊं? अरे नहीं, तू सिर्फ टेक्स्ट टैग का बना रहा है, ये तो तू इसमें अरे सब क्या डाल रहा है। बनाऊं? बट देख, हम लोग को टेक्स्ट टैग का फ्लो दिखाना है, एंड हम कहाँ लोग लिखा है को वो? अपने, अरे उसमें ही लिखा है, टेक्निकल अप्रोच टेक्नोलॉजीज टू बी यूज्ड, मॉड्यूल्स टू बी और डेवलप्ड, तो ठीक है। तो टेक्स्ट टैग का फ्लो नहीं है ना, हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान अलग होता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो जो बना रहा है, जो फ्लो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, मतलब यूजर क्वेरी डालेगा वो कैसे जाएगा। फिर हाँ तुमने तो देखा वो जाए तो बनाया मैंने है ना, मैंने तुमने वही वो बना बना दिया ना। दिया। तो हाँ तो टेक्स्ट टैग का फ्लो बना तो नहीं सकते देखा जाए तो, है। बेसिकली। फिर अरे और एक, नहीं भाई, अरे हाँ, देखो सिर्फ बताना है कि टेक्स्ट टैग में क्या क्या जा रहा है। अभी देख, अगर मैं रिएक्ट यूज कर रहा हूँ तो रिएक्ट से मेरे नोड में जा रहा है, देखो बस वैसे एरो डालना था, मैं वैसा बोल रहा था, समझ रहा है? तो अभी जो मैंने लेटेस्ट भेजा है देख, लेटेस्ट, उसमें हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी तेरा यूजर वेब क्लाइंट में तेरा रिएक्ट का इमेज जाएगा, तेरा मिल नोड जाएगा। जेएस का अनएक्सप्रेस का इमेज जाएगा, तेरे ओके, एआई ऑर्केस्ट्रेटर में फास्ट एपीआई का जाएगा, ठीक है? देन फिर तू अपने पास और क्या इमेज है? मिस्ट्रल एआई का वो है। हाँ फिर मिस्टर ले आएगा, हाँ पाइथन और मिस्टर ले आएगा जाएगा इसमें, एंड देन फिर मोंगोडीबी, बस
समझ रहा है? वो ठीक है। टेक्स्ट का फ्लो है एंड जो तूने जो पहले बनाया है वो उसका यूजर का फ्लो है। तूने बना दे तो मैं नहीं बनाता फिर अभी। मेरे को देखने दे, पढ़ने दे। वो बहुत डिटेल्ड है, मतलब तेरे से ही इसमें ही है, बहुत डिटेल्ड है। वो मरमेड में बना है। मेरे मरमेड को नॉट मरमेड डॉट फाइल एस, भेज, मरमेड चेक फाइल कर सकते हैं कभी कभी। बहुत बेकार है वो, बट उसमें एडिट करना बहुत बेकार है। इतना हार्ड नहीं है, बस इसका ना मेरे को इशू एरोस का है, वो एरो प्रॉपर हाँ, नहीं है। एरो का इशू ही है। मैं कलर भी चेंज नहीं कर पा रहा, स्ट्रोक का कलर कोड करना पड़ा, बट चेंज तो नहीं हुआ वो। चैट में हम लोग मैंने लास्ट 5 हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं? भेजा है। साइन इन क्यों मांग रहा है? हाँ, साइन इन करना पड़ेगा। कितनी चीजों में साइन इन किया है मैंने, भगवान जाने। एकदम डेटा गया अपना। पूरा ये टेढ़ा क्यों है एरो, सीधा क्यों नहीं होता? वेट, मैं एरो डिलीट ही कर रहा हूँ और फिर इसके एरो को फिक्स कर देता ऐड भी नहीं हो रहा है, डिलीट एरो हूँ। ऐड ऐड भी होता नहीं हो है, रहा। ऐड होता है। फ्लोटिंग एरो पे होता है, क्लिक बट कर, मेरा तो नहीं हो रहा था। फ्लोटिंग एरो पे फिर तेरा ऐड कर। हाँ, और कर नीचे ले तू, मैं ठीक ये है, मैं वाला एडिट करता कर हूँ दूंगा अच्छे से। इसको। दिल बहलाने का एक और बहाना, 20 मिनट गाने पे गाना, only on 104.8 इश्क FM। 104.8 इश्क FM पर दो दिलों की टकरार और दो झोंक से लबालब प्रेम कहानी, और सोनू और स्वीटी चलो भाई। प्यार दिल भर जाए सोनू, प्यार दिल भर जाए सोनू, स्वीटी तुझे खुद से 2 सेकंड में प्यार करता, लेकिन तुझे दर्द में नहीं देख सकता। चल शुक्र है, इतनी अकल तो है तुझमें कि तुझसे प्यार करना कितना पेनफुल हो सकता है। प्यार का पेन मीठा मीठा होता है स्वीटी, और कभी तो तुझे ये दर्द सहना पड़ेगा। हाँ, अभी मेरे को बताओ इसमें क्या क्या एडिट करना है। आगे बोल। मतलब एडिट मतलब क्या रखना है, क्या निकालना है। देख, यूजर ब्राउजर रखना है कि यूजर क्लाइंट रखना है? यूजर क्लाइंट, हाँ ठीक है। क्लाइंट ना, ब्राउजर तो थोड़ी अपन तो ये ऐप एक्टिव है, निकाल देता हूँ। ठीक है, अपन ऐप नहीं बना रहे हैं। हाँ, अरे ये डिलीट हो गया। वाह, लेस्टर कर लेती है मुझे पागल। क्यों बे? ये पकौड़े वाली बात बोलकर इनडायरेक्टली तो तू यही बोलना चाहती है। अरे
वो एक एक ही निकाल, वो पूरा सिलेक्ट मत कर। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ। एक कैनवा के इमेजेस डाउनलोड कैसे करते हैं, मतलब जो अपने एलिमेंट में यूज किया है? डाउनलोड कैसे करते हैं मतलब? कैनवा में जो अपन ने अभी डाला है टेक्निकल अप्रोच के इमेजेस, वो कॉपी डाउनलोड पेस्ट कैसे कर। करूँ? नहीं हो रहा है वो ड्रॉ डॉट आईओ में, कुछ इनविजिबल शिट आ रहा है। वेट लेट मी सी। एक सेकंड, वरना मेरे को नेट से लेना पड़ेगा। मेरे ड्रॉ डॉट आईओ में हो रहा है क्या? मैं ऐप पर हाँ इनविजिबल आ रहा है। एक काम कर, डाउनलोड इमेज ऑप्शन आता है ना, इसमें नो डाउनलोड का ऑप्शन में नहीं आता है। हाँ देख देख देख, राइट क्लिक कर, इन्फो पे दबा हाँ एंड ऐड टू फोल्डर दबा। अपलोड्स में ऐड टू फोल्डर में तेरे अपलोड वाले में डाल, तो तेरे अपलोड्स में आ जाएगा, मतलब तूने बेसिकली डाउनलोड किया है। वो देखने दे, आया है क्या? रिएक्ट का इमेज ही क्यों नहीं आ रहा है? देख ये इमेज है, इन्फो पे जा, तो मेरे पास समझा, ऐड ऐड टू टू फोल्डर पे फोल्डर। जा, तेरे अपलोड्स में डाल दे, ऐड टू फोल्डर। एक मिनट तू देखा, अभी तेरा फोल्डर कौन अपलोड कौन? हाँ अब मैं अपलोड्स खोलता हूँ। इधर है। किधर है? किधर है? रिएक्ट का है ही नहीं इसमें, बाकी सब है। वही तो बोला, क्योंकि रिएक्ट हमने यहाँ से उठाया है, कैनवा का एलिमेंट से उठाया है, हाँ अच्छा इसलिए। तो डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ तो अच्छा रिएक्ट वापस इधर से उठा दे। हाँ। इंटरनेट। हाँ अभी देखो, यूजर क्लाइंट है, देन यूजर से चैट, यूजर विल अपलोड चैट और अपलोड फाइल, चैट फाइल अपलोड। यस चैट मत रख, फाइल अपलोड ही रख बस। चैट भी रखना होगा, लाइक अगर देख यूजर ने एक बार तो फाइल अपलोड कर दिया, हाँ देन वो चैट करेगा ना। ओके, क्वेरीज के लिए ओके, हाँ ठीक है। हाँ अभी देख अपना एपीआई गेटवे है, नोड ग्राफिया। जेएस, नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस दिखाना है, किसी भी एपीआई गेटवे लिखूंगा। हाँ वो रख। हाँ कि हम लोग ने वो टेक्निकल अप्रोच में देखा है, इसके लिए मतलब जरूरत नहीं इतना, नहीं बट रख, इसमें भी रख, रहने दे। और ऑल्सो इसमें ना पहले फाइल अपलोड लिख, उसके बाद स्लैश करके चैट लिख, वैसे कर। मतलब फाइल अपलोड को पहले लिख, उसके बाद चैट, क्यों? क्योंकि मेन वही है ना कि फाइल मतलब जब पढ़ेगा कोई भी तो पहले फाइल अपलोड पढ़ेगा ना, उसके बाद फिर हाँ ठीक है चैट का है, ठीक है, इम्पोर्टेंस वैसे जाएगा। कर दे। हाँ अभी एपीआई गेटवे करता हूँ। हम्म। अगर अभी एपीआई गेटवे है, हम्म। एपीआई गेटवे पे नोड जेएस पे आरबीएसी होगा, ऑथ होगा एंड क्यू होगा।
बट फिर हम लोग आई थिंक मेरे को उसमें डिफरेंट बॉक्सेस में दिखाना चाहिए, क्योंकि हाउ विल वी एक्सप्लेन कि मैं एक काम करता हूँ, क्यों क्या है? एपीआई गेटवे के नीचे नहीं, वेट एक सेकंड, इसमें देखना है क्या बोलता है। और क्या क्या हाँ, तो क्या किया है इसने भगवान जाने। ये लोकल लिस्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्या Why are we using local list? लोकल डिस्क में ही तो अपना पीडीएफ रहेगा, क्या रहेगा? पीडीएफ। मोंगो एक मिनट डीबी तो में लोकल जाएगा ना डिस्क, वैसे, वो वैसे बोलेंगे ना 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 फिर। क्या? एक मिनट तेरा दिखा वो लास्ट में, लोकल डिस्क सर्वर का होगा आप बोल रहे होंगे। अरे माउस का जो है ना मिडिल क्लिक, वो प्रेस करके ड्रैग कर। माउस का जो स्क्रोलर रहता है ना, उसको क्लिक करके ड्रैग कर माउस नहीं, टच पैड पे। और टच कर। सो 2 फिंगर ठीक है, ये कर, देख। जापान। ओह नाइस। देख, है। अगर एपीआई गेटवे पे हम लोग का एपीआई गेटवे तो आएगा, उसके बाद नोड जेएस में या एक्सप्रेस पे तेरा रोल बेस्ड चेकिंग होगा, ऑथ होगा एंड क्यू होगा। क्योंकि क्यू होगा फॉर मल्टीपल क्वेरीज, तो उसको क्यू में डालेंगे C4 लगा के, एंड ऑथ तो वो भी चेक करने के लिए कि यूजर है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आरएबीसी की यूजर का रोल क्या है, तो यूजर का रोल ऑथ में नहीं आएगा,